Mishra, Dr. Sinha, everybody else on the dais, and dear friends, सबको जोहार. मैं थोड़ा मिक्स आई थिंक हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बोलूँगी. आज हाँ. So, Vice Chancellor Sir told us some of the challenges facing us today. I want to talk about one more challenge which is also creating a lot of mental stress, and that is climate change. जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, इसमें कभी हम यहाँ के किसानों के लिए, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, खासकर महिला किसान के साथ काम करती हूँ, कभी कभी धान बोने के बाद पानी नहीं आता, सूख जाता है. कभी हार्वेस्ट के पहले, कटाई के पहले ज़्यादा पानी आ जाता है, तब भी वो मर जाता है. इससे काफ़ी मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि सब लोगों के मन में यही है, खासकर हमारे झारखंड के जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, कि यहाँ एक तो है झारखंड में जितना भी सुंदर स्टेट है, जैसे हमारे से पहले स्पीकर बोल रहे थे, पर भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा झारखंड में है. और ख़ासकर जो आदिवासी समाज है, उसमें जो गरीबी, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, तो नॉन आदिवासी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स में है. अधिकतर खेती का काम करते हैं, 50% यहाँ के लोग खेती का काम करते हैं. और खेती में क्योंकि जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का बहुत अधिक प्रभाव है. सुनाई दे रहा है क्या कि तो आज क्या हो गया, जब मैंने काम शुरू किया संथाल परगना में 30 साल पहले, तब झारखंड नहीं बना था एक्चुअली. कोई भी बाहर नहीं जाता था, पलायन नहीं करता था, माइग्रेशन बहुत कम था, सब अपना खेती करते थे. आज किसी की भी गांव में चले जाइए, आपको पुरुष नहीं मिलेंगे. सब पुरुष बैंगलोर, चेन्नई, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई काम ढूंढने के लिए जा चुके हैं, क्योंकि खेती के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते. और खेती आजकल महिला ही खेती का काम चला रही है झारखंड में. और इससे अगर कुछ हो जाए, अगर नहीं कर पाए, तो जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि जो उनके पुरुष भी बाहर जाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, लो पेड काम में ही जाते हैं. इसीलिए एजुकेशन, आप लोग यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है स्टूडेंट्स को देखकर कॉलेज में, क्योंकि कल एक और कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं. वहाँ पे बोल रहे थे कि झारखंड में एडल्ट्स के जो एडोलेसेंट्स की संख्या को देखेंगे, तो जो कॉलेजेस की सीट अवेलेबिलिटी है बहुत कम है. तो इस प्रांत में, झारखंड में, जो आप दिल्ली, बम्बई ले लीजिए, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो Thank you, sir. Moving on, I request Professor Nitya Rao, ma'am. She is, apart from academician, she wrote many books, and she'd like to present her one book to our Honorable VC, sir. We thank you, ma'am, and we thank you, sir. We again request Nitya Rao, ma'am, to kindly accept a certificate for the participation in this conference as a keynote speaker. And for that, I again request our Honorable VC, sir, to present her with the certificate. Thank you, sir. Moving on, we have our third keynote speaker here, Dr. Satish Chandra Mishra, an economist with a PhD from Cambridge, is the founder and executive director of the Earth Shastra Institute. He is a strategic thinker whose extensive international career spans development economics and political commentary. His global experience include serving as a key advisor
in Ethiopia during its civil war, helping shape its transition from socialism and working as chief macroeconomist for USAID across 22 African nations. He played a pivotal role at the OECD in Paris in expanding its membership and assessing assistance during the Asian financial crisis. As head of UNSFIR for the UNDP in Indonesia, he refined the national discourse, winning a global award for his Human Development Report. Now, based in Bali, he fosters closer India-Indonesia ties through the Earth Shastra Institute, promoting strategic partnerships and civilizational linkages. We welcome you, sir, and I invite you to please come on podium to give his keynote lecture. Welcome you, sir. नमस्कार, मैं बनारस का हूँ, लेकिन पिछले कई साल से दुनिया में खो गया। तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, थाईलैंड और कई जगह से अंत में इंडोनेशिया पहुँचा 2 साल के लिए, और अभी हमारा इंडोनेशिया में 25वां साल हो गया। और अब वहाँ And there is a lot of good news and a lot of bad news. Many of us don't really know what the good news is, but hope that it's good in any case. And we do see quite a lot of the bad news. So let me just go over very quickly what that means. One of the good news, pieces of good news is that some of our best medical scientists and so on in the world are now telling us कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो 300 साल तक जिएगा, और अब ऐसी दुनिया होने वाली है जो कुछ लोग 300-400 साल तक जी सकते हैं और जिनकी IQ भी 300-400 हो सकती है. And this is the work of people like David Sinclair and others who have been basically saying that we have now discovered a mechanism to reset our aging genes. And so they took an example of 2 mice. One was very old and the other was very young. And they reset the genes of the aging mouse, and every cell in its body became much younger. And what they're saying is that in the next 20 years, this is going to be reality. So, for many people, that would be very good news. The other good news is fusion energy. If we can solve the problem of fusion energy, and a lot of work is being done on this, and it looks like within the next decade or 2 we will solve this problem, you basically have limitless, low-cost, non-polluting energy from the sun. What that means is that all our food security problems disappear. All we have to do is pump that excite us. The very fact that we walk around and if our phone is switched off, we immediately become nervous, as if the whole burden of the world will be there captured in this phone if it's off for a few seconds. So this is the 21st century. And before I go on to the bad news, one conclusion that I draw from this, which many of you studying social sciences would have been taught at a very early age, a very early period of your study, is that we predict the future by drawing trends and patterns from the past. This is standard for social sciences. Century is that we cannot use the past to predict the future, because we are actually in a period of systemic transformation. The complete structural change of everything. In a period of uncertainty, we are basically, for social scientists here who are used to drawing nice smooth graphs, we are at a kink, we are at a corner solution. So all these various fancy maths and so on don't really help us very much to predict the future.
So the first lesson of the 21st century uncertainty, if you like, is that we have to imagine the future and work back to the present and see how we could make that future come about. We cannot rely too much on trends of the past. So that is an important aspect of research. My second broad point, let's get to some of the bad news. The bad news is, of course, that we can live in autocracies where every second of our movement is known to somebody else. And that can be used to basically isolate us, to bully us, to dominate us, and to imprison us and destroy us. And the big fear about AI is that robots could do that. Those of you who have seen that film, 2001, where this robot, HAL, goes crazy, used to think that was science fiction, but it is perhaps reality today. So there's a lot of bad news here also. You know, we're worried about climate change. We're worried about the rate of urbanization where our children go out and never come back, where the villages are being denuded. We have a lot of these uncertainties which are out of our control, but affect every aspect of our life. They affect our family life, they affect our relationship with the children, they affect our relationship with the boss. Things we took for granted, let's take universities. There is no guarantee that in 10 years we will have universities. So everything that we have taken for granted is now disappearing in front of our eyes. So that uncertainty, which we cannot predict easily, is something which is causing tremendous loneliness, social isolation, and so on that we have talked about. Now there's one other layer which we don't think about. Look at politics. Okay. We're used to talking about countries and governments and so on. But if you did two exercises only, if you took a table of country GDPs and insert into them the annual revenue of the largest 30 companies in the world, you will find that NVIDIA is richer than India. Apple is richer than Germany, and so on and so on. So we have another layer of uncertainty of large enterprises who affect the decisions that will affect our lives. But we can't see how that is being done. And the same is with the big cities. If you take the mega cities of the world, insert them in the same way into this table of country indicators, you'll find that the mega cities are much more richer and more powerful than most of the countries in the world. So we have so many different decision-making systems and decision-making players, again, that we cannot predict the future by using past data the way we used to. So if we cannot predict the future, we are facing uncertainty at every single aspect of our life. So it's no longer a case of, there is a specific problem. If you talk about it openly to somebody else, you could go to group therapy and so on, and you will solve that problem. You'll be able to deal with it. Because you're worried about one thing. By the time you have your coffee at 10 o'clock, you're worried about something else, and on it goes. So what does that tell us? The first thing it tells us that we have to understand the nature of this uncertainty very clearly. And the second is, it's a future if we cannot rely on the past to predict the future. If we have to imagine the future to move in the present, then what it is telling us that many of the core values that we have believed in, which we cannot measure easily, like morality, ethics, duty, all these kinds of concepts that in Asia we have grown up with, are exactly the things that we have to refocus on, because that gives us the compass with which to try and even prioritize what kind of uncertainty of the 20th century we need to deal with. The second conclusion here is that once all the guardrails of certainty have been released, anything is possible. We are living in a kind of Star Trek world, where they used to say, beam me up, Scotty, and you immediately are, evaporated and you appear somewhere else. So in this kind of thing, those of us who are knowledge workers, if you like, अब तो यही हो गया, इतने साल पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद जो हम अपने को कहते हैं, वो यही है
पढ़े फारसी बेचे तेल देखो भाई किस्मत का खेल, क्योंकि जो हम बेच रहे हैं वो तेल है। क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई अगर हम देखते हैं आजकल की दुनिया में, तो बहुत सी चीज़ जिसका इनिशियल असम्पशंस था, जिसकी उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स थी, वही रेलेवेंट है। So there is a certain impoverishment of knowledge that we have to deal with here. My final point is that many communities have worked out how to do this. In Bali, there is a philosophy of Trihita Karana, which means there are three sources of happiness. One is harmony with God, the other is harmony with nature, and the third is harmony with yourself or with your fellow human beings. So you've got societies which have tried to deal with this. But the modern world, the mantra is love of self. You must love yourself. You must decide what is good for your own future. And that is the priority. The trouble is that in this kind of world, all notion of community is lost. So we live for ourselves, we work where we like, we make decisions for ourselves, and in the end, more or less, we die by ourselves. And that leads me to the final statement. I was in Ethiopia for a while, and one of the things I learned, that 10 o'clock in the morning, everybody used to come out of their homes and visit the one person who was making coffee. And the Ethiopians, like the Japanese, have a very long, elaborate system of making coffee because coffee was discovered in Ethiopia. And they say, he who eats alone dies alone. And that is a very important message. And one of the ways that we have to live in the 21st century is to recreate that sense of community. How we do it, how we make sure that in the next 25 years, decisions are made not on the principles of love yourself, but you're part of a community, is the kind of challenge that psychologists like you have this great responsibility of showing us how to do this. Thank you. Thank you so much, Dr. Satish Chandra Mishra, sir, Executive Director, Earth Shastra Institute. And for your kind words, we would like to appreciate you by presenting you a small certificate. And for that, I request our guest of honor, Shri Praveen Kumar Topo, IS, Secretary, Government of Jharkhand, to present him the certificate. Sorry. I request our Secretary, GB, Dr. CSP Lugun, sir, to present him the certificate. Thank you, sir. We have one more guest here, Professor Debashish Sen Sharma, sir. He is engaged in positive psychology and noted filmmaker, theatre practitioner and academician, an acclaimed filmmaker and director. He is currently Professor of Script Writing at the Satyajit Ray Film and Television Institute of Kolkata. Sir, I request you to kindly share your expertise. We welcome you, sir. Thank you everyone on the dais. Audience, I will not elongate my speech at all because I have a session post-lunch. I know pre-lunch sessions, if it is spoken too much, is already boring. So it was a fantastic experience coming here, and when I was entering, I had such a warm welcome, and I'm quite excited to present and talk about my topic, which is on theatre, definitely, and theatre and well-being, how it can be connected. I'm sure you must have, there were students who have seen theatre sometimes or have done theatre at any point of their life. I think that will be engaging for them. And thanks to the department for organizing such an interesting conference, international conference with such a fantastic amalgamation of topics and speakers. Wish everyone all the best. Thank you. We thank you, sir. And now I request our professor in charge, Professor Ilani Purti ma'am, to kindly present a small certificate to Professor Debashish Sen Sharma. Kindly accept, sir.
Thank you, sir. Now I request our one more keynote speaker, Dr. B.L. Dubey, sir, Director, SIS Center, Medina, USA, to please come on the stage, podium and share your expertise. We welcome you, sir. Good afternoon to everyone. Dr. Singh, Vice Chancellor of Ranchi University, Dr. Rao, Dr. Mishra, Dr. Lagoon, organizing person of this conference, Professor Madam Ranjan, dignitaries on the dais, guests, faculty members and students. Lot many things people have shared with you. I appreciate, and something is very important given by Dr. Singh, that this community, at least this teaching community, never get retires. Because what we have been doing for years together, 60 years, 65 years, we continue till we are active. And to live active, you have to do every day something. Just if I ask to this audience, how many people you do yoga every day, then I'm pretty sure more than 50% people will not raise their hands because they don't have time, they don't do. And I assure you, if you practice yoga every day, at least you can control a lot of problems which most of us, like spondylitis, backache, we get. I have been, when I was in army, long back, I had backache and spondylitis. X-ray was very clear. Still I have backache and spondylitis, but it does not bother me. I manage it. Because every day, no question where I am, except when I am traveling. I do exercise, yoga and meditation, almost 40 minutes to 1 hour, and walking every day, at least half an hour. And I did today also in Senate House lawn and in my room. So I request you all, and very rightly Dr. Singh emphasized. And the second thing, that lot many times when I discuss with what to do after getting retirement, I say, pay some money from your retirement benefit, that pension or whatever, and request the college or university, I will pay you 10,000 a month and I will come at least once a week or twice to teach, because I want to live young still. And never think yourself you are retired, because nobody retires. The day you feel you are retired, you will be old and then nothing will be left for you. So I am not retired, because still I am active, and after getting retired in 2005, after 62 years, I continued in Alaska teaching.
And still I am not retired because I have lot of programs and I come for 3 to 4 months to India every year to continue my workshops in different universities. And I am only 83 years old, and I wish I should be good for another 10 years at least, my budgeting. So thank you, sir, for your food-provoking, thoughts. This is very good for mental health. Thank you, Dr. Singh. Now, what I have prepared more is for psychology community. And then I will share something because since 1966, when I was studying in NIMHANS, that time it was All India Institute of Mental Health and Mental Health, not neurosciences, those days. So 60 years almost I will complete next month. I'm working on projective psychology, Rorschach, and I have developed my own a test that is known as somatic ink blot test. That somatic ink blot test you can just go on and you will find everything, all the details, www.somatikinkblots.com. The test is on web, first test in ink block on webs. And because of that, it is available. You can do from anywhere, and your client can be anywhere, any part of the world. And the test is very good in doing assessment, personality assessment, team building, leadership, and good for, school to detect sexual perpetrator, and then matchmaking, clinical diagnosis like, depression, anxiety, schizophrenia, and lot many. But more is being used nowadays by many psychiatrists in solving marital issues, lot of marital problems. So that I will be talking something about that. But the projective psychology, it has come as a protest against the questionnaire that is called as objective test. And what is objective in that test? In fact, it does not require a professor or a psychologist. Any assistant, even lab assistant working in psychology department can administer questionnaire. Because what is objective in that? Very simple. It's administration, scoring, and interpretation. And what you do as a professor or as a psychologist, you do nothing. You do not apply your mind. It does not measure personality of the person. It measures the personality of the person who has made the test. For example, you ask question, and the question can be like this: would you like to have lunch? This is lunch going to be, say. Would you like to have lunch? Yes or no? Answer is no. Now you ask again, don't you take lunch? And then I say, yes, I take lunch, but this is not the time for me. And further you say, when you will take lunch? And then, I feel irritated, why you are behind lunch? This is my way of doing when I want, when I don't want. And then finally, I say, at least I don't want to take lunch with you. The question that whatever answer is going to be, it is not a true answer. Because why should I have lunch with you? So we manipulate, and any gentleman who is intelligent can smell what part of his behavior you are
going to assess, so he will manipulate. And that manipulation is known as social desirability. You say it is socially desirable to lie. I don't know what kind of social desirability. This is not our social desirability. We Indians never promote. But yes, Britishers and Americans, they do. Here also sometimes, and somewhere it is written, Satyam bruyat, Priyam bruyat, na bruyat, Satyam Priyam. Then what do we mean by jhoot bole? So now this is not that. But the question that does it measure the personality for what you are trying? So no. Projective test has come as a protest against this questionnaire. And then in projection, the images, particularly ink blot, they have been shown to people, the client. It may be during selection procedure, it may be during clinical interview, in clinical setup in hospitals, or for matchmaking, or for selecting an employee in a school for safe employees. And then on the basis of those responses, you try to understand the personality of that person, and it is possible. Because the response what he has given, it has come from here. But particularly, all those who are dealing psychology, when you talk about Rorschach, any method, I follow all that. When I was a student, I was doing and following Clover method. Because in Bangalore it was Clover, and in CIP it was Beck method. Now it is GOSSNER method. I have interacted, luckily, with many of these. Beck I know, I have met personally. GOSSNER was a good friend. But the question, when you interpret what they say, GOSSNER says, if you have not given 14 responses, 1-4, then your protocol will not be interpreted. While doing instruction, while giving instruction to subject, do you say that you have to give at least 14 responses, otherwise your responses will not be interpreted? No. You don't do this. Then why you do latter part? The question that why that person has not responded to a particular image, because that image is so powerful, it has blocked your thinking process. There is some trauma behind. Now try to understand that trauma. And this is what mental part. And Freud, while he was doing psychoanalysis, he said that if you want to understand the unconscious mind, then you have three things on your disposal. One is that free association that is being used still in army. I have seen during selection procedure. And then second part, you have to do projective test. And the third will be hypnotic relaxation. During that, lot many things come out. I practice hypnotic relaxation and that hypnosis as part of my therapy. So during last, 25 years, I do just one test. Somatic ink blast, earlier I was doing Rorschach, and one relaxation technique, that is hypnotic relaxation. And in that, it helps in big way. So maybe that here I will be interacting tomorrow, and then on Monday, more I will emphasize on this part. And lot of, lack problems, I should say, because again, to psychology professors, when you score Rorschach,
You say human responses, animal responses, anatomical responses, sex responses. So all that animal responses, they indicate one thing, that is animal, more, less, or whatever. Do you think sometimes that all animal responses is not one? If you have seen lion, if you have seen goat, if you have seen mice, if you have seen snake, if you have seen other reptiles, if you have seen bull, and if you have seen crocodile, basically all are animal, but they convey different meanings. So you have to interpret their nature, and that nature of that animal will be more correlated with the nature of that person. So projection, even 2 response, 3 response or 4 response are enough to understand the personality of the person. And because of such problems, I will further say, because I'm running a journal. I started it in 1993 when I was in Punjab University, Chandigarh professor. SIS Journal of Projective Psychology and Mental Health. It is on website. And you can get it even free. So, during 20 years, I was trying to understand what is the situation of this projective test, particularly Rorschach, in India. During 20 years, only 10 papers are published. 20 years, only 10 papers. It means either Rorschach has become invalid, or those who were interested in learning Rorschach, they has gone. They are no more. Why they are not doing? Because it requires a lot of time. And questionnaire, just you tell your assistant, score it and tell me. And many times, like MMPI, 16PF, it gives you everything. Read it. And you can also understand what is the interpretation like any other blood test. It is written, if it is homoglobin, then for female, from here to there. For male, if it is your ESR, then what is the rating? If it is your blood fasting or after food, this is the rating. Oh boy, these are clear. You are an educated person, you can understand where you stand. So if this is the practice, then I'm afraid that this practice will make us clerk, not psychologists. We will lose our status. And then you have to learn something. Higher mental process. And many times, because I have administered these, somatic ink blast in all IITs, or older IITs. I'm not talking now the IIT which is in every district. And then IIM during selection, and it yielded very good result. Whom to select, whom not to select, and even many industries, I gave that who will be the possible, the person to go ahead. 10 years before you can tell, this is a person who will get breakdown. So test tells, very good, provided you spend some time. But questionnaires will never do it. So this is something we have to do. And then, the future of psychology depends and will promote your total health, total well-being. So yoga is included there.
Meditation is included there. And when I heard that, Swami Yogadanand, yes, I have gone through his book. Very inspiring, and I love it. And then the ashram is here, and center is here. And madam is so nice, madam. I feel happy too. Yes. So such institutions is here. And still if you have not gone, then I cannot say anything. But I love to be there at least during my 4 days stay, 3 days I am here in GOSSNER college, then 2 days I am in Rinpas. So I wish I must see this time. So do meditation. I do meditation. I am sorry, I don't get time to do every day. Because when I do, it takes me half an hour or more than that. But energy comes to me. I have learned it from Yoga Bharati. Once I was invited to Yoga Bharati, Munger, to teach them hypnosis. And they taught me Yoga Nidra. And there was nothing, but it is the same, old wine in new bottle and something like you say whatever. Both are the same. Whether you say hypnosis or you say Yoga Nidra. We have everything. In fact, Indians, our Nalanda, our Mahabharata, everything is more than 5,000 years before. But what we talk of, European culture and European civilization, they are not that old. We have to quote them. We forget to quote ourselves. We are gurus of the world. And again we are going to be guru of the world. I salute Baba Ramdev, at least he made yoga popular throughout the world. Americans also have started doing. So, the yoga should be included, meditation should be included, and the new world, like, see, this is our, but mindfulness has come because it is having its stand from foreign countries. So mindfulness is much better than anything else. So anyway, our new things will be computer aided. Yes, that's very good. Many things we get because the kind of, library I have attended, my children never. Because everything they can get on no time. And notes you take, you can print everything, whatever, which is not available in your library, you can get from web. So those things are there, very good. But still, if you spend time on our system, then probably it will help you much more. And then power is here. We talk about superpower. Who made superpower? Super people. And we are here. So apply it. Make as much as you can effort, and then it will give you everything. And then very rightly mindfulness, and likewise, total mental health, all that is possible. First you keep yourself good, healthy, and then think of nation and the universe. And then certain things we are leader, we will remain leader. Like sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve vandhanu pashyantu ma kaschid dukkha. Who says this? Indians only. This concept is nowhere. American is still. Their children, they will get loan after school graduation to study. But our people, our Indian fathers, they sell their property, they sell their home, they sell everything just to give the education to their children. And this is continuing. And then this new generation, they are learning the norms which is existing in European countries and America. And then we are promoting old age home. So we have to feel, ashamed sometimes
for the newer development, and our society and our norms is changing. This is not a healthy trend. So many things what we have we should promote, and the newer thing what we are adopting must be, you have to think, is it good for our culture? That may be good for their culture, but not good for our culture. So anyway, these are something new. Psychologist has a responsibility to promote this, and with this, I feel very happy, honored to be invited for this conference, and I'm for 2 days with you. Maybe we'll be meeting again. Jai Hind. We thank you so much, Dr. B.L. Dubey, sir, for sharing his expertise here. And we would also like to acknowledge him by providing a small certificate. For that, I request our professor in charge, Professor Ilani Purti ma'am, to please present the certificate to sir. Moving on, I can see in crowd we have 2 more guests here. And the first one, I request Dr. Pragati Bakshi ma'am, Principal, Yogda Satsang Mahavidyalaya Ranchi, to please come on the stage. And I request Dr. Ajay Kumar, Coordinator IQAC, to felicitate her by presenting her the shawl and memento. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Further, we have here Dr. Shruti Narayan, ma'am, Department of Psychology, PG Department, Patna University. Ma'am, I request you to please come on the stage, and I request Dr. Balbir Keketta, sir, to present him a small shawl and memento as a token of gratitude. Dr. Shruti Narayan, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, Now I request Dr. Haradhan Kohri, sir, Assistant Professor, Department of Hindi, GOSSNER Ranchi, to give vote of thanks as a closing ceremony of this session. I request sir to please come on the podium. Dr. Haradhan, sir. गोस्सनर महाविद्यालय रांची के मनोविज्ञान विभाग और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह सर, श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर, श्री अब्बू बाकर सिद्दीकी सर,
डॉक्टर CSP लुगुन सर, प्रोफेसर इलानी पूर्ति मैम, डॉक्टर नित्या राव मैम, डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्रा सर, डॉक्टर BL दुबे सर, श्री देवाशीष सिंह सर, नीति टोप्पो मैम एवं गोस्सनर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण एवं विभिन्न महाविद्यालय से आए प्राचार्य, प्राध्यापकगण, शोधार्थीगण एवं विभिन्न मीडिया के टीम, आप सबके प्रति मैं महाविद्यालय परिवार और मनोविज्ञान विभाग की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य समन्वयक डॉक्टर अनीता रंजन मैडम और उद्घाटन सत्र के मंच संचालक द्वय डॉक्टर आकांक्षा तिग्गा मैडम, डॉक्टर आमोस प्रशांत टोप्पो सर के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Radhan sir. And please stand for national anthem. Thank you, everyone. Please come forward for a group photograph. I request VC sir and all delegates and professors to please come forward for a group photograph. Immediately after that, we will proceed for lunch, and the lunch is being served at the girls' common room in that building. And at 2 o'clock, we will have our technical session in room number 15 and room number 14 in this building. फोटोग्राफी के बाद सभी कृपया लंच के लिए प्रस्थान करेंगे, जो कि गर्ल्स कॉमन एरिया उस साइंस बिल्डिंग में है। सभी से मेरा अनुरोध है कि फोटोग्राफी के बाद लंच के लिए प्रस्थान करेंगे साइंस बिल्डिंग में, और उसके तुरंत बाद 2 बजे हमारा टेक्निकल सेशन शुरू होगा, जो कि रूम संख्या 14 और 15 में है, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक में है। धन्यवाद।
honor ma'am. Ma'am is the head and associate professor, Department of Clinical Psychology, RIMPAS, Ranchi. And she will be sharing her thought on childhood disorder under PWD Act in mental health setup. Thank you, ma'am. Thank you, Sir Gupta, sir. Another distinguished personality among us, Dr. Sanjay Kumar Munda. I will request Dr. Samlesh sir, the Dean of Commerce of GOSSNER College, कि आप उन्हें आके सम्मानित करें. Dr. Sanjay Kumar Munda, आप Professor of Psychiatry and in charge Center of Addiction Psychiatry CIP Ranchi हैं. सर का बहुत बहुत धन्यवाद. एडिक्शन आज हमारे समाज में एक बहुत समस्या के समान में उठ खड़ा हुआ है यंगस्टर्स के बीच में. और सर का जो टॉपिक है आज डिस्कशन का वो है इन्हांसिंग मेंटल हेल्थ टिप्स फॉर कॉलेज यूथ. इट इज़ अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक एंड आई थिंक सर वी आर गोइंग टू इन्वाइट यू अगेन इन अमंग द स्टूडेंट्स. Yeah, all the other faculties, students are not present here, but I would like to have a special program on this, sir, and kindly do come and give some thoughts of this. Thank you, sir. Now let's begin our session, and first of all, I will request Dr. Benison, sir, to come on the stage and give a brief introduction about today's first guest, Dr. Prabhat Barnawal, sir. Hello. Thank you, John, sir, for giving me the opportunity to introduce Dr. Prabhat Barnawal. Now, I would like to give a brief introduction about Dr. Prabhat Barnawal. He is an associate professor in the Department of Economics at Michigan State University. He also holds affiliation with the Environmental Science and Policy Program and the Asian Studies Center at Michigan State University. Over the years, he has served as a visiting associate professor at Kochi University of Technology, Japan, and as a visiting senior fellow at the Institute of Human Development in India. Reflecting his deep engagement with global academic and policy communities, Dr. Barnawal research lies at the intersection of environmental and energy economies, development economies, and public policy. His empirical work explores how governance, technology, and behavioral factors shape public service delivery, environmental adaptation, and fiscal sustainability in developing countries. His recent studies examine leakage reduction in India's direct benefit transfer program, the fiscal sustainability of rural electrification, and the local socio-economic effects of mineral mining. His research has been published in leading journals such as American Economic Review, Review of Economic and Statistics, Journal of Development Economics, and Journal of Environmental Economics and Management. In addition to his research, Dr. Barnawal has received major research grants from prestigious institutions including the National Science Foundation, USA, International Growth Center, UK, and the WIS Foundation. Among others, his collaborative projects have addressed critical issues such as arsenic mitigation in Bangladesh, clean fuel adoption in India, and improving bureaucratic effectiveness in public service delivery. He teaches both
undergraduate and postgraduate courses at Michigan State University, including economics of environmental policy, microeconomics of development, and development economics. His academic leadership extends to mentoring emerging scholars through initiatives like Association for Mentoring and Inclusion of Economies. Dr. Barnwal holds a PhD, MPhil, and MA in Sustainable Development from Columbia University, and MA in International Development from the International University of Japan, and a BE in Electrical Engineering from a National Institute of Technology, Surat, India. His career embodies a rare blend of technological rigor, policy relevance, and deep commitment to a sustainable development and governance reform. Thank you. Thank you, Benison sir. Benison sir is himself HOD of Economics in GOSSNER College. He must be knowing this topic, understanding consumer behavior, basic theory and evaluation. Now, I will request Dr. Prabhat Barnwal to come and share the thoughts. Thank you very much. The description was too long. I'm just a student of economics even now, and I will just give a brief description for some students are there in back. So, what we study in undergrad or what we think about doing later, sometimes those things change. Undergrad I did engineering. I worked on the shop floor in manufacturing in India, and then I decided to switch field and I ended up in economics. So, our preferences change, our motivation change, our, career outcomes also change over time. In one sentence, I can describe that most of my work is on India-related topics. That was my original motivation to switch to economics, and I'm happy that I'm able to, continue with that. I will give very brief, this discussion points about how psychology and economics are related in modern marketplace as we are seeing. I don't know how relevant it will be because the conference is not really in my field, but I will try to bridge the gap between psychology and economics with one or two examples, and try to show the relevance of it for students and faculty. So, as we think about markets are primarily a psychological system because we all have our perception that what price I should pay for something or what price I should charge for something. If you are producer or seller, how much should I sell it for, or if I'm buyer, how much should I buy it for? So it has a lot of, as you can understand, everybody has their own subjective reference or other, constraints or learning their own experience, and that's how markets are, basically market equilibrium are determined, like what is the final price of a good or quantity being sold. So some of you might be using Flipkart or Amazon. You know that you can buy things on the platform, and these platforms are pretty unique compared to our local retailers, or if we go to buy some clothing, कुछ कपड़े खरीदने हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो दुकानदार दिखाता है उसकी तुलना में ये जो प्लेटफॉर्म्स है दे आर वेरी डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, दोनों हैं, राइट? तो एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस. हैज एनीबडी हर्ड अबाउट इट? कंज्यूमर सरप्लस. तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा. सपोज आम का सीजन है, ठीक है, एंड वी ऑल लाइक मैंगोज, आई लाइक मैंगोज, और हमें आम खरीदना है. दिस इज द फर्स्ट वेव ऑफ प्रोड्यूस, सो वी रियली लाइक मैंगो एंड वी गो एंड आई लाइक इट सो मच दैट कि मैं उसके लिए 100 रुपये देने को तैयार हूँ एक आम के लिए, ठीक है.
नेक्स्ट पर्सन को आम उतना अच्छा लगता है बट उतना अच्छा नहीं लगता है, तो वो 75 रुपये देंगे, 75 रुपीज़ देंगे उसके लिए। थर्ड पर्सन है, वो बोलेगा मैं 50 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, 50 रुपये दूंगा, आम ठीक है अपनी जगह पे है, मैं भी अपनी लाइक मेरे पैसे भी अपनी जगह पे है, तो 50 से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर कुछ होंगे वो 25 देंगे, कुछ 10 देंगे, कुछ दे ही नहीं पाएंगे, मतलब जीरो भी, उनको इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको आम अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर ने मना किया है, राइट। तो अगर आप सोचिए इसके बारे में कि आम तो वही है, सबको पता है आम कैसा टेस्ट में है, ऐसा भी नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि आम का टेस्ट कैसा होता है। हम उसको नैरो डाउन भी कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का आम मान लेते हैं, गॉर्जित हुआ या फिर लंगड़ा हुआ, जो भी है। अगर उसकी प्रकार भी हमें पता है, आम का साइज भी पता है, तो वो क्या है, आम की जो आइडेंटिटी है वो हमें पूरी पता है, बट अलग अलग लोगों के अलग अलग उसका पे करने की, आप बोल सकते हैं कि उनका आंकलन है या क्षमता है या उनका जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से वो कोई 100 दे रहा है, कोई 75 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, और मुझे आम मिला 50 रुपये में, तो किसका फ़ायदा हुआ? जो बेच रहा है उसका तो फ़ायदा हुआ, बट मेरा भी फ़ायदा हुआ कि मैं 100 रुपये देने जा रहा था, मुझे 50 मिल गया, तो मैंने 50 रुपये अपने बचा लिए, ठीक है। ये है कंज्यूमर सरप्लस। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इनफैक्ट 50 से लेके 51, 52, 53 अप टू 100 तक जो भी पे करने की सोच रहे थे, उनको अगर 50 रुपये पर किलो में आम मिल गया तो उनको फ़ायदा हुआ है। किसी को 1 रुपये फ़ायदा हुआ, किसी को 10 रुपये फ़ायदा हुआ, किसी को 25 हुआ, किसी को 50 हुआ, ठीक है। ये है कंज्यूमर सरप्लस। इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस भी सोच सकते हैं हम कि कोई आप आम बेच रहे हैं, आप 25 रुपये बेचने सोच रहे थे, मैं 50 में बेचने की सोच रहा था, कोई 75 में बेचने की सोच रहा था, लेकिन आम बिका 50 रुपये में, मार्केट में एक प्राइस है उस दिन 50 रुपये किलो, तो जो 25 में बेचने की सोच रहा था उसको भी फायदा हो गया, वो तो 25 रुपये मिल रहे थे किलो के, उसको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इसमें क्या होता है, अब आप सोचिए ये कि ऐसा क्यों, ये तो इनएफिशिएंसी है। अगर कोई 100 रुपये देने को तैयार था आम के लिए, तो वो उसको फायदा हो गया, तो इस हिसाब से वो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इसी तरह कोई 25 रुपये देने वाला था लेकिन आम 50 रुपये पर किलो ही मिल रहा है, तो वो बेचारा खरीद नहीं पाएगा, वो घर चला जाएगा। इवन दो कुछ सप्लायर्स थे जो 25 रुपये में दे सकते थे, क्योंकि मार्केट में एक रेट चल रहा है, थोड़ा निगोशिएशन होता है बट यूजुअली मार्केट में एक ही रेट चलता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट से प्रोड्यूसर सरप्लस, सबको अलग अलग प्राइस दिखा के। सो इन इकोनॉमिक्स दिस टर्म कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप प्रोड्यूसर, आप फर्म्स हैं और आप हर कस्टमर को उस प्राइस पे बेच सकते हैं जो वो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है उसकी, तो दैट विल बी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बट ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल मार्केट में हम जाते तो होता नहीं है, सबकी अलग अलग वो होती है, लेकिन सबको एक ही प्राइस पे सामान मिलता है। बट अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एल्गोरिथमिक प्राइसिंग और प्लेटफॉर्म्स, these platforms can manipulate it. If they know कि प्रभात की willingness to pay for mango is 100 rupees, they will show me 100 rupees price. If they know कि किसी और की willingness to pay is 50 rupees, they will show them 50 rupees price. So ये प्लेटफॉर्म से ये चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे I think that is where psychology becomes again very important to understand like what are the pros and cons. आप अगर प्रोज में सोचेंगे कि अगर इस तरह प्लेटफॉर्म अपनी प्राइसिंग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी विलिंगनेस टू पे है उतने पे ही उसको सामान बेचेंगे, उसी प्राइस पे उसको सामान बेचेंगे, तो इससे उन लोग का फायदा हो रहा है जो आम पहले नहीं खरीद पा रहे थे, जो 10 रुपये में किलो, 10 रुपये पर किलो खरीदना चाह रहे थे, 25 रुपये में खरीदना चाहते थे, 40 में खरीदना चाहते थे, 49 में खरीदना चाह रहे थे, उनको नहीं मिल पा रहा था। बट बिकॉज अब समहाउ प्लेटफॉर्म ऐसे मैच कर रहा है कि उनको भी बेच सकते हैं, उन लोग को नुकसान हो रहा है जो ज़्यादा देना चाहते थे बट उनको कम में मिल रहा था पहले, बट प्लेटफॉर्म ऐसे एल्गोरिथमिक प्राइसिंग से इसको ऐसे सेटअप कर रहा है कि उनसे उनका ट्रू विलिंगनेस टू पे उनको चार्ज कर सके। तो इसके आई थिंक काफ़ी implications हैं, देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज अबाउट इट, एंकरिंग, काइंड ऑफ सोशल लर्निंग, की मुझे समझ में आ गया कि अगर आप 50 दे रहे हो या 25 दे रहे हो तो मैं 100 क्यों दूँ, अगर हम वी टॉक टू ईच अदर। Anchoring also, people have some some prior experience, they are not going to change even though they can pay more. There is some loss aversion also कि मैंने मार्केट में अगर 50 में खरीदा था और यहाँ पे 1 रुपये कम में मिल रहा है तो मैं उसको बाय नहीं करूँगा। तो ये सारे
like other aspects हैं जो psychology, behavioral economics, जहाँ पे इसको देखा जा सकता है. The point I am mentioning it is कि मॉडर्न इकोनॉमी और मार्केट्स काफ़ी चेंज हो गए हैं. सेकंड प्राइस डेस्टिनेशन इज समथिंग कि जहाँ पे आप ज़्यादा खरीदो, ज़्यादा मैं अगर 5 किलो आम खरीदूंगा तो मुझे सस्ता मिलेगा, या मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ तो पहले बुक कर लेता हूँ तो मुझे सस्ती मिलेगी, लास्ट फ्लाइट बुक कर रहा हूँ तो पहले बुक कर लेता हूँ तो मुझे सस्ती मिलेगी, लास्ट मिनट में करूँगा तो महंगा मिलेगा. दैट इज अ सेकंड डिग्री प्राइस डेस्टिनेशन. थर्ड डिग्री प्राइस डेस्टिनेशन इज समथिंग कि स्टूडेंट डिस्काउंट, स्टूडेंट्स को सस्ता मिलता है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए डिस्काउंट है मान लीजिए, या फ्रीडम फाइटर्स के लिए डिस्काउंट है मान लीजिए, या टीचर्स के लिए डिस्काउंट है. तो वो सारी चीज़ें हैं. देयर टीचर्स के लिए डिस्काउंट है. तो वो सारी चीज़ें हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ दिस कैटेगरीज. दैट्स हाउ इट हैव बिकम वेरी प्रीवेलेंट. एंड इसमें आई थिंक साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों की जो ट्रेनिंग है इट्स वेरी हेल्पफुल. लॉट ऑफ दिस प्लेटिमेंटल स्टडीज टू अंडरस्टैंड हाउ टू टारगेट different price segments, different consumers, even at individual level, and that is exactly when it will be called like first degree price discrimination, if you can discriminate prices for each individual, because हर किसी का अपना जो आम का जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें डिफरेंट प्राइसिंग की विलिंगनेस टू पे है. आप उनसे वो अगर प्राइस ले सकते हो तो दैट इज अ परफेक्ट फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. अगर आप फ़ायदा सोचो तो जो लोग 50 रुपये से कम उनको देने की क्षमता थी या इच्छा थी, उनको आम नहीं मिल रहा था, उनको अब आम मिल जाएगा. तो ये एक फ़ायदा है. कंज्यूमर सरप्लस एक्सपेंड हो रहा है और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको आम खाने को मिल रहा है, उनको आम चाहिए था. नुकसान ये है कि जो लोग ज़्यादा देना चाहते थे उनको कम में मिल रहा था, अब उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये एक नुकसान है. अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो यू विल लूज. सो दे आर लूजर्स एंड दे आर विनर्स, दे आर गेन्स एंड दे आर लॉसेज हियर. And these require more study as well, like depending upon, like if regulations are not there, the firms will try to extract more profit in this way. It may benefit some people who were going to pay less. Now they are going to get the access because of this algorithmic pricing, but it will also bring loss to people who could have saved more, but now they have to shell out more money. So इससे ज़्यादा डिटेल में जाना तो खैर पॉसिबल नहीं होगा इस शॉर्ट टॉक में. So this is something I wanted to share, and this is where I see that psychology and economics, like the training, is becoming more and more useful. A lot of these platforms are hiring economists and psychologists to run these experiments, to understand it. And I think economics are, everybody else related to public policy have a more broader role here to play. That while we are, we cannot say that algorithmic pricing cannot be there. That is, we all use phone, we all use app, we use Flipkart, Amazon. हमें उसके हम भाग तो नहीं सकते. But what kind of regulations should be there कि so that कि जो अगर ये regressive है, especially लो इनकम हाउस होल्ड को डिसप्रपोर्शनली अफेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या रेगुलेशंस लगाएं कि ये डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से उनको नेगेटिवली अफेक्ट ना करे. आई थिंक दिस इज वेयर आई विल स्टॉप. थैंक यू वेरी मच. If someone has any question, I'm happy to take. Okay, thank you. Thank you, sir. Sir has very nicely explained the consumer behavior. In fact, when we look at the subject psychology, it is related to almost every subject. Even in the political science, we study the voting behavior. Suppose you are going to purchase anything, the psychology comes there. Which mentality you have got, what type of product you are going to buy, and how you are going to take the decision to explain it. Now I will request Professor HOD of Department of Maths, Professor A.K. Lal, to come forward and kindly give the certificate to our very prominent speaker today, Dr. Prabhat Barnawal. Okay, we will wait for just for a while, sirs. Now we will move to another speaker, Dr. Debashish Sen Sharma. He is here. He is Professor, Head of the Department of Screenwriting, Satyajit Ray Film and Television,
Institute. I would like to invite here Alicia, Dr. Alicia, to introduce the speaker, please. Good afternoon, everyone. Today we are honored to have a respected personality with us, Dr. Devasis Sen Sarma. So let me take a moment to have a brief introduction about him. Professor Devasis Sen Sarma holds a dual postgraduate degree in English Literature and Film Studies from Jadavpur University. Currently, he is the professor and head of the Department of Screenwriting at Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata. He has been working as an independent filmmaker and a theatre practitioner for the last 25 years, engaging himself in a variety of activities such as filmmaking, theatre, positive psychology, and academics. He has directed 2 feature films, several documentaries, television commercials, and produced multiple contents for television as well as for web media. He is also engaged with theatre as an actor, playwright, and a director, and has collaborated in many national and international projects. Academically, he has been teaching film studies in different universities in India and abroad. He is the founder member of Chai Pani, a forum for creative expression with specialization in performance and production. Thank you. We welcome you, sir. Thank you, everyone, all dignitaries on stage. Each time I hear my introduction, I face an identity crisis. It happens with me. While I was having lunch, someone was asking me, so who are you exactly? I said that I am a filmmaker. Okay, so you will be talking about film. I said, no, theater. Okay, so but you're a filmmaker talking about theater, that too in a psychology conference, you have no degree in psychology. And yeah, that's how life is. It takes different twists and turns. So my topic today is how to use theater and how theater can be helpful in knowing us. To be or not to be, that is the question with which we can start. I'd start with a quote from Auguste Boal. Auguste Boal is a Brazilian theater activist, which we know. He said that we all must do theater to discover who we are and find out what we could become. Few years back, when I was in US in Cornell University, I was talking with some of my friends. I was having coffee with a data scientist, and he was saying that, look, almost all the professions will be extinct very soon. With coming of machine technology and digital, everyone will be at stake. People were AI. The word AI was not used because I was talking before COVID. I'm talking about time 2018, something like that. So, like all good things happened before COVID. So, he was saying that the lawyers will be mostly at stake. I'm not saying, he was saying. Then he spoke about the people who work in restaurants. This service, entire service thing will be machinized. Then he spoke about the teachers. The teachers will lose their job because there are AI tools, there are YouTube, everyone can see how to, and online things will be at stake. But what he said specifically is that only one profession will for sure survive, that is performance, theater. No AI, no machine technology, no digital data can replace theater. I found that point very interesting, and I got a little excited. So I thought of taking this as a takeoff point of my paper presentation and discussion. Theater, we all know that has been a strong influence. How many of you have seen theater on stage? Can you raise your hand? Ever seen theater on stage? Okay. How many of you have ever acted? School, colleges, post-school, post-college, anywhere? Nice, nice. Little percentage, but yet little hopeful also. We all know theater can be of 3 kinds primarily. One, proscenium theater, the theater which we can see on stage. Dark auditorium, lifted space, people are sitting. And there is a folk theater,
like Ramlila, Nautanki, all these things which show all these things that happen in different folk forms. And there is another form called third theatre. Third theatre is a form of theatre which was propagated by Badal Sarkar. Badal Sarkar is a very famous theatre person. I was very privileged to get a theatre training under his tutelage. He was influenced by the Brechtian style of alienation effect. So these are the three primary forms of theatre. I am saying form-wise. But what theatre do primarily is that it tries to create, work on the area of rasa. Rasa. We know there are 9 rasas which are very important. This evocation of rasa is the primary purpose of any performance. I was talking to sir a little while back that whenever we are also taking classes, we actually perform. A 1-hour class is actually a 1-hour mono acting. I am performing in front of my audience, which is captive audience, and I have to create a certain rasa in them. So what are the rasas that theatre can create? This is based on Natya Shastra. We all know the seminal text with which we work. Rasas are Shringar, which means love, Hasya, humor, Karuna, compassion, Veera, bravery, Raudra, anger, Bhayankar, fear, Bhayankar rasa, Bibhatsa, disgust, Adbhut, wonder, and Shanta, calmness. These are the 9 emotions that a performance can create, produce, a theatre can produce. Well, I'm saying theatre, I'm talking about theatre generally, but rasas are not only into theatre, but also into dance and other things, in overall umbrella performance. So when I say hasya, laughter, what happens? Am I as an actor getting very happy, or am I, when I say karuna, sadness, am I becoming sad? No. I am trying to create that sadness in you. So an actor tries to use body, voice, and other movements to create bhav. Actor can create bhav. That bhav will transfer it to the audience who will receive the bhav, and the rasa is generated. Rasa doesn't happen like this in front of the stage. Rasa has to be generated. I should say something very interesting, you will smile. So my way of saying it interestingly is the bhav. And when you smile, that is the rasa. I'm seeing someone dying on stage. That person is acting or enacting a death. That person is not dying. If I see, there is a sequence that where I am crying, seeing my mother's dead body, that person is not my mother and I am not crying. I am doing a bhava. But seeing that, the rasa is generated in you. This process is very, very important and interesting. That's why theatre immediately connects between me as a person, you who is seeing it or receiving it. So I am the sender here and you are the receiver. If I just I try to encapsulate few pointers why theatre is important basic levels, like it creates, primary reason is that it creates community. Any performance creates community. So the moment I'm seeing it with you, we become a community. Film can also create that, but theatre does it with more dexterity, which is important. It also creates a bond between the actors. Like if 6 of us are performing on stage, we do through rehearsing and performance, so that creates a sense of bonding. There are processes in theatre workshop which I take in different places, where how this bonding helps me to empower myself through improvisation workshops, through role playing, through knowing thyself. There's a process of knowing thyself. So I know myself, then I brush off myself and go to a shoe of someone else. When I'm playing a role of someone else, I'm not that person. For that, not
to be that person, first I need to negate myself. So first I need to know myself. Step 1, I know myself. Step 2, I negate myself. Step 3, I take the shoe of that person. But when I'm playing the role of, a Ravan. So am I becoming Ravan? No. I'm playing the role of a Ravan, but some aspect of me is still there in that Ravan, which I'm carrying. I'm playing the role of Ram. I'm not becoming Ram, but I'm carrying some aspect of Devashish in Ram. That's why if the same character role is given to me and Sir, both of us will play differently. Given the same script, same story, we will be playing differently because we are also carrying a self in us. This is carried forward when we are doing this thing along with the bonding. It definitely inspires hope. It offers representations because whenever I'm seeing a theater, I see one, my unfulfilled desires. I cannot do that thing, but on stage I can see that person is achieving that thing. So my unfulfilled desire is represented, which is very important. There are representations of marginals like LGBTQ, different religions, which can be seen on theater. I may not see that representation in my community. In my locality, there may not be an LGBTQ, so I may not be aware of the crisis of an LGBTQ person. But when I'm seeing it on play, on stage, I can get an idea how they work, how they function, and that the way they think immediately become important. And definitely, what I always believe that theater workshop through dramaturgy can create confidence. I have seen transformations. I have seen transformations through theater workshops. I've seen someone very inconfident, almost lost all hope in life after doing a theater workshop for certain days or doing a production. There's a sea change, complete sea change. The way he or she speaks, confronts things has changed completely. So that is also very important that theater can do. In this context, I would love to, I started with Auguste Boal, talking about Auguste Boal. I don't know if you're aware of this thing or not. Auguste Boal is a very, very, very important person. He is a Brazilian theater thespian, I should say, and theater theorist who invented the process of theater of the oppressed. We are just discussing about that psychodrama, drama therapy, the root, and he used that root of psychodrama in a certain way and created a style of theater which we call theater of the oppressed. So what happens there? There are multiple stages. So a performance is happening. A performance, while it's happening, it is stopped midway and the audiences are asked to comment on that. This comment can happen in two ways. One, they can sit there and comment and say that, okay, this character can do that thing, he could have done that thing, then the story could have been going to that zone. Second stage is an participative forum theater, when that character is called on stage and asked to perform and take the story in their own way. I'm giving you an example of Boal's theater technique, which I always use. I'm not telling this using this word therapy, but I use this technique very strongly. So there was a sequence which Boal used where a kitchen setup is happening, and backdoor kitchen of a restaurant or maybe a restaurant. There are four characters. Anna is a very inconfident cook who doesn't know how to cook well. Maybe it is her second day or third day. There's a manager who is always fearing to lose his job. There's a very strict owner and a colleague. So these are four characters which are being performed. And Anna is bullied, Anna's confidence is crushed down. The play stops in a certain point and we invite people, come and now do what Anna, had you been Anna, what you'd have done. They come on the stage, that Anna is replaced, that person come, and they take forward the play to a certain point.
And amazing results have come. Boal calls it theater of empowerment. So I go, and now they want to show how Anna would have protested. Like, had I been Anna, how I would have protested. How would I have done conversation? Someone could have shouted, someone could have said in a very cold tone. So evoking a sense of empowerment, evoking my emotions through forum theatre is a very important aspect. I would love to give example of one more very, very interesting case study of August Boal. It was happening in East Europe. Primarily, he started this process in East Europe, and then it traveled. We performed in Korea. So there's a train route of maybe 1 hour. So in station 1, 6 actors boarded the train, along with people who were on the train. And they started creating situations. Situation 1, a girl who is bullied for being black by a white man. And there are 2 passengers who are also actors. One is supporting them and one is against them. It's happening. Sorry. There was someone is bullying, just bullying happening. After 2 stations, 2 actors again board the train. Everything is prefixed. One of the actors now starts supporting this girl, as if they get to know the girl instantly in the train, and they start supporting the girl. After 2 more stations, just beside that seat in front of the door, a girl and a boy boarded the train, not together like as friend or couple. They boarded separately. But now the girl started bullying the boy because the boy was effeminate. So we could see 2 situations happening on the train. In one side, a girl bullied for being black by a white man, and on the other side, the man bullied by a girl because he is effeminate. The experiment showed that how people started reacting within the train, completely unaware of the fact that it was a performance happening. It is one of the finest experiences that Boal has done. It has worked so fantastically. And case studies have shown that in certain areas, when the boy was bullied, there was stronger protest. How can a girl bully a boy like this? There was stronger protest. There are certain areas where, of course, a girl who is black is supposed to be bullied. How can a white man not bully a black girl? That was the European mentality that was happening there. And then counter voices raised, and people really started to protest, and things changed haywire in multiple cases. Each time, Boal is saying that I am bringing out the emotions, your pent-up emotions, which you otherwise cannot show in your family. The way in a negative way, I'm saying, the way when we beat a pickpocket. Someone has done a pickpocket and we just start beating that person. Because I could not beat my wife, I could not beat my son, I could not beat my boss, so everything goes towards the pickpocket person. And we use all our valor, vigor, masculinity to beat that person. Here also, all these emotions come up, pent up. If I have time, I can give one more example of Boal's case, how Boal acted on that. A woman boarded a bus and dressed as a pregnant woman, who was not pregnant but used something to show as a pregnant woman. And they were talking about her delivery can happen anytime this week.
But she is not willing to go to he was now needed to take into a hospital. Her friend was calling to a public hospital phone number and calling, can we get a bed? But the public, they were so influenced by the woman's statement, they stopped that person and they say, okay, I have a connection, I know this private hospital, there's a good bed, I can say, and they arranged everything in the next station. So the next station, when the woman boarded, they found the ambulances waiting. And this entire action, I'm using the word action as bold caps. This action was taken by public who was completely unaware of the fact that it was a performance. So, Boal's technique, when you use Boal's technique, it really, it evokes, there are two ways we can see. One, someone is coming here and performing because I know it's a performance and taking the story to a different course. Option two, a performance is happening and it is evoking my emotions and I react. Stage 3, I don't only react, I react proactively and take steps. So these are the steps with which theatre can strongly progress and strongly influence an audience. And through our process and techniques of role-playing, meditative exercises, and know thyself, like we use a very small, very interesting game where we ask people to take any object that is in front of you. Like you can also do anytime, now also. You can just pick up any object which in front of you and find two similarities between you and that object and two dissimilarity between you and an object. This can be done anytime. You can try it now also. Like I just immediately take a pen. I'm doing it impromptu. If I say that, what is the similarity between me and the pen? So a pen can write. It has words. I have also expressions. I can also express through words, body language and everything. One dissimilarity. This pen can write only if someone holds the pen. But I think I can express without any holding. Like this, I'm trying to say. Pick up any object and then use it as a prop and bring out relationship between you and the prop in 10 multiple ways other than the use of that prop. Like use the pen not as a pen. Use it as something else. These are different exercises we do, and with theatre, I think that this bonding, it has been proved again and again. It worked in community very well. It creates a certain kind of evocative exercises, and to quote Boal again, I would love to say one interesting line that Boal said. Theatre is a form of knowledge. It should and can also be a means of transforming society. Theatre can help us build our future instead of just waiting for it. Thank you. Thank you, Dr. Devashish Sharma sir, for a beautiful presentation, how the theatre knows thyself, to be or not to be. Thank you, sir. Now I will request the head of the Department of Physics, Dr. Mayan Mehto, to come forward to give certificate to Dr. Prabhat Bandawal sir, and HOD of Hindi, Asha ma'am, to give certificate to Devashish Sharma sir.
next speaker is Dr. Mansoor Jahan, Head of the Associate Professor, Department of Clinical Psychology, RIMPAS. And she will be giving a lecture on childhood disorder under PWD Act in mental health and setup. And I will request Professor Nirima Tiru to give her introduction. Please. Sorry, one more thing. If you have any questions where we can already discuss and we can interact. गुड आफ्टरनून हाउस, नमस्कार, जोहार। मेरा नाम नीलम तीड़ू है और मैं गोस्सनर महाविद्यालय में के मनोविज्ञान विभाग में शिक्षिका हूँ। आज के सत्र की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मशरूर जहां, हेड एंड एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी रिनपास से आई हुई हैं और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे एक शिक्षिका के रूप में उनका स्वागत करने का यह अवसर मिला है, क्योंकि मैम आज की अतिथि के साथ साथ मेरी गुरु भी हैं और उनके मार्गदर्शन ने मेरे शैक्षणिक और कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभकारी रहा है। मैं नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मैम के बहुत सारे योगदान रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं मैम का एक छोटा सा परिचय पेश करने के तत्पश्चात मैम को अपने विषय में बात करने के लिए आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर मशरूर जहां वर्तमान में रिनपास कांके रांची में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने विभिन्न वर्कशॉप एवं कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान दिया है। डॉक्टर मशरूर जहां मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई व्यावसायिक संगठनों से संबद्ध हैं, जैसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स, सोमैटिक इंक ब्लड सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकेट्री ऑफ इंडिया, दीपशिखा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ एंड भारतीय मिर्गी संगठन आदि। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों के लिए उनको 1998 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स ने आर किशोर यंग साइंटिस्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर मशरूर जहां के लगभग 100 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। वे कई शोध पत्रिकाओं के एडिटोरियल रिव्यूअर बोर्ड में सम्मिलित हैं। इनके निर्देशन में कई शोध छात्रों ने एमफिल स्तर के डिसर्टेशन एवं पीएचडी थीसिस का शोध कार्य किया है। अतः अब मैं मंच पर डॉक्टर मशरूर जहां को आमंत्रित करती हूं ताकि उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान द्वारा हम सभी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू नीलम। वेरी गुड आफ्टरनून, जोहार। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, चाइल्डहुड डिसऑर्डर अंडर राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट इन मेंटल हेल्थ सेटअप। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इसके रेलिवेंस को देखते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया। सो वी विल बी टॉकिंग अ लिटिल अबाउट दिस टॉपिक। लाइक when we see the topic, there is one term that is Rights of Persons with Disability Act. So this is an act that talks about what disability is, what are the categories that are coming under disability, how the certification of disability will be done. So along with that, we will be discussing a little about clinical feature and what broadly we do for management of these conditions. Childhood conditions are a very broad conditions. Many conditions come under that. We will be only discussing those conditions that are described in this particular act. So coming to the outline, we will talk a little about like persons with disability, then core problems for which assessment for certification is done, particularly in mental health setup. And the conditions are intellectual disability, specific learning disability, autism, mental illness, and multiple disability. So a very brief introduction about all these things we will discuss. So what is disability? The RPWD Act defines persons with disability like a person with long-term physical, mental, intellectual,
or sensory impairment, which in interaction with barriers hinders individuals' full and effective participation in society equally with others. Like the most important component is when the person's disability interacts with barriers, then the difficulty is evident. Like say, मान लीजिए लाइब्रेरी है आपकी, तो लाइब्रेरी हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पर ही हो, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के ही बिल्डिंग में एंटर करने के लिए 2-3 स्टेप चढ़ना होता हो. अब अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो वो लाइब्रेरी जा सकते हैं. स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जो 2-3 स्टेप हैं वो एक बैरियर की तरह खड़े हैं between the student and the library. Suppose we make a ramp there, then even persons who are using wheelchair can go to the library. So the important component is that the Act focuses that there should be a barrier-free environment where everyone is able to access the things equally with others who are not having any disability. In the Act, 21 type of disabilities are defined, but we will be focusing on those disabilities that we see in mental health setup. Like in the beginning I told, these are the disabilities. We will be discussing it one by one. Next. So intellectual disability. What is intellectual disability? So intellectual disability is a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning, that is hierarchical functioning, reasoning, learning, problem solving. And the second component is in adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skills. So these are the deficits. So a person who is having limited intellectual ability, yes. Problem in adaptive behavior. So if these two are present, then we think about this intellectual disability and further components will come. Next, Kariye. So when we are giving a diagnosis, when we say that limited intellectual capacity, it means the IQ, when we calculate on a standard IQ test, it should be below 70. When we say that adaptive functioning deficit, so there should be 2 or more areas of adaptive behavior where there should be significant limitation. That means the person is not able to perform according to his or her age. जैसे अगर हम कहते हैं कि बच्चे को बोलना आना चाहिए, मान लीजिए कोई बच्चा 5 साल की उम्र तक भी बोलता नहीं है, तो जहाँ जहाँ सोशल एस्पेक्ट में बोलने की ज़रूरत होगी वो सारे फंक्शंस अफेक्टेड होंगे. सो दिस इज़ डेफिसिट इन सोशियो एडाप्टिव फंक्शनिंग. दैट मे बी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग और व्हेन एवर वी आर इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. कब कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का केस है? ज़्यादा फेमिलियर वर्ड मेंटल रिटार्डेशन आप सब लोगों ने सुना होगा. ज़रूरी है इसके लिए एविडेंस होना चाहिए दैट इट हैज़ स्टार्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड. डेवलपमेंटल पीरियड मीन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स. मान लीजिए कि 20 साल की उम्र में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ट्यूमर हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन जिससे कि अब उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हम IQ असेस करते हैं तो वो बिलो 70 है, तो हम उनकी डायग्नोसिस मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ डेवलपमेंटल पीरियड में शुरू नहीं हुई थी. एंड दिस इज़ द क्लासिफिकेशन. प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड, एंड देयर इज़ ए कैटेगरी ऑफ बॉर्डर लाइन मेंटल फंक्शनिंग आल्सो. हाँ, नेक्स्ट करिए. जब भी डायग्नोसिस करते हैं स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. शुरू से बच्चे हो सकता है पेडियाट्रिशियन के पास ले जाए जाते हों, जनरल फिजिशियन के पास ले जाए जाते हों. बहुत से लोग जिनको समझ में नहीं आता है कि ये एक
बीमारी है, इलनेस है, इसके लिए कहाँ जाना है, तो हो सकता है झाड़ फूंक कराने भी ले जाते हों। उनको लगता है उससे बच्चा ठीक हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग के लिए हमको उस जगह पे देखना है जहाँ पे बच्चे शुरू में ले जाए जाते हैं। तो जाहिर बात है पेडियाट्रिक्स, फिजिशियंस, इन जगहों पर जो है बच्चे पहले ले जाए जाते हैं। और एक स्क्रीनिंग वहाँ पे ज़रूरी है, बिकॉज देयर मे बी अदर डिसेबिलिटी ड्यू टू विच द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू do the socio-adaptive functioning or he is not able to perform on any intelligence test. Say for example, vision impairment, hearing impairment, locomotor impairment. The child is not able to hold some object and we are giving a sanguine form board where blocks are there and the child is supposed to place it on certain place. So the child knows what is the size, shape of the block, where it has to be placed. But due to problem in using the upper limb hand, he is not able to put it there. So these conditions should be screened and assessed by the pediatrician so that we know what type of deficit the child is having and whether it is classifying for intellectual disability or not. For diagnosis in the Act, two tests are recommended, two categories of tests. We have seen that there should be problem in adaptive functioning. So Vineland social maturity scale is used for that. And then we have a variety of tests for assessing intelligence, but the Act mentions only these tests. BKT or its any variant, Binet Kamath test, you can say Stanford Binet test, any variant of that, and MISIC, that is Malin's इंटेलिजेंस स्कोर पे मिलता था। लेकिन अब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्किल तो सिखाना चाहते हैं, सिखाते भी हैं। सो एवरेज इंटेलिजेंस के बच्चे बहुत सारे स्किल देख के सीख लेते हैं या उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाता है तो वो सीख लेते हैं। लेकिन when we are dealing with a child with intellectual disability, we have to use certain specific methods to teach them those skills or activities of daily living. तो उसके लिए हमको पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना है, because we cannot say have the practice session in our clinic setup or hospital setup. So parents will be trained, they will apply those skills at home, those teaching skills, and they will teach the child at home and child will practice. If there is other comorbid condition, any other disorder, say like epilepsy or any other condition, so there should be management of comorbid conditions. उसके लिए जो भी relevant problem को देखने वाले consultant specialist हैं उनको दिखाना होगा. Next. Then coming to the next disability, that is specific learning disability. So what is specific learning disability? Specific learning disabilities mean a heterogeneous group of conditions where there is a deficit in processing language spoken or written. तो लिखी हुई चीज़ को बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम होती है। That may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write or spell or do mathematical calculations. बहुत सारे बच्चे आप देखिएगा जब सीख रहे हैं लिखना तो B को D, D को B लिखते हैं, small letters जब लिख रहे हैं. That is the initial phase of learning. But if we see the child of specific learning disability, even beyond that learning age and learning phase, he will be writing D for B, B for D, है ना, W को M लिख दिया, M को W लिख दिया. जब लेटर मान लीजिए मैन लिख रहे हैं, सिंपल सी चीज़, तो MAN के बजाय NAM लिख देंगे, सो सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. कभी कभी सिमिलर साउंड करने वाले चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं. अरिथमेटिक डिफ़िकल्टीज़, मैथमेटिकल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ही कॉमन है. आपने लिखा 12
तो उन्होंने यूनिट और 10th के पोजीशन को नहीं समझा तो पढ़ा 21। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज वहाँ होते हैं। It includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dysapraxia and developmental aphasia। बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। नेक्स्ट, तो टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके लिए सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, रीडिंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया। एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना है कि एज अप्रोप्रिएट जो लर्निंग है उससे लोअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड लर्निंग हम देख रहे हैं, यूजुअली 2 ग्रेड लेवल्स बिलो के परफॉर्मेंस होते हैं, तब हम उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो मेनली रीडिंग डिसेबिलिटी में आप एरर्स देखिएगा, मेकिंग मेनी एरर्स इन ओरल रीडिंग, ओमिशंस, एडिशंस, डिस्टार्शंस ऑफ वर्ड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डिफ़िकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रिंटेड लेटर, कैरेक्टर एंड साइज, रीडिंग स्पीड इज स्लो और एज अप्रोप्रिएट एबिलिटी नहीं होती है। तो हो सकता है कि क्लास 1 के बच्चे को जो चीज़ सीख लेना चाहिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे क्लास 4 में हैं और अभी उसको सीख रहे हैं, क्लास 3 में है अभी उसको सीख रहे हैं, उनकी मिस्टेक्स कंटिन्यूड है। क्या होता है फिर, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते नहीं हैं तो अवॉइड करने लगते हैं रीडिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों को। फिर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ये ऐसे बच्चे हैं कि डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी है कि इनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग IQ 85 और एबव होना चाहिए। इसका मतलब ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे नहीं हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं, पढ़ने लिखने के टाइम दिक्कत है। तो लोगों को क्या लगता है, सब चीज़ में बुद्धि चलती है, बस पढ़ने लिखने में नहीं चल रही है। बच्चे को दिक्कत है पढ़ने में, उसने क्लासरूम में बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ ठीक से नहीं पढ़ा तो डायरी में नोट नहीं किया, अपनी आंसर बुक पे नोट नहीं किया, उसके बाद उसको लोग केयरलेस चाइल्ड, टीचर के कहने पे भी लिखता नहीं है, इनडिसिप्लिन्ड चाइल्ड, इस तरह के लेबल्स लगा देते हैं। जबकि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे कंडीशन जो हम लोगों ने कहा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, लिंग्विस्टिक स्किल की प्रॉब्लम हो सकती है, परसेप्चुअल स्किल की प्रॉब्लम हो सकती है और अटेंशन की होती है। जैसे हम लोगों ने कहा ना, B को D लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये मालूम भी है कि D लिखेंगे तो हमको लेफ्ट साइड में जो है सर्किल बना के लिखना है और B में राइट साइड, लेकिन यही नहीं पता चला कि राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है। M और W अप साइड में क्या लिखना है, डाउन में क्या लिखना है, नहीं पता चला। सो देयर मे बी डेफिसिट इन परसेप्चुअल स्किल्स बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन। तो उसी तरह से यहाँ मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम है। 6 को 9 लिख दिया, 9 को 6 लिख दिया। फिर जैसे हम लोगों ने कहा कि यूनिट, फिर 10, 100 वो पोजीशंस नहीं पता है, तो उसकी वजह से लिखी हुई चीज़, पढ़ने वाली चीज़ सब गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन, लिखने की दिक्कत। हो सकता है बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। डिफ़िकल्टी जो है, पुअर स्पेलिंग हो सकती है, एरर्स इन ग्रामर एंड पंक्चुएशन, पुअर हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया ना कि वो सीक्वेंसिंग नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, MAN शुरू करना था तो इधर से शुरू कर दिया NAM। अब सारे लेटर्स वहाँ मौजूद हैं लेकिन उनका सीक्वेंस करेक्ट नहीं है, तो लिखने में स्पेलिंग की दिक्कत हो गई। नेक्स्ट,
हर एज में अलग अलग तरह के क्लिनिकल फीचर हैं। प्री स्कूल में हम लोग देखें तो जब शुरू में सीख रहे हैं तो वर्ड की राइमिंग, उसको लिखना, नंबर्स को सीखना, इस तरह की दिक्कत मिलेगी और बच्चे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। और छोटे बच्चे जब बार बार उनको टोका जाता है तो अपने साथ के बच्चे जो पीयर ग्रुप है उसमें आप देखिएगा तो उनका इंटरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। लोगों को मजाक, छोटे बच्चे मजाक भी बना देते हैं, हर दिन ये बच्चा जो है हर दिन टीचर से डांट सुनता है। तो इस तरह की चीज़ों से उनमें पीयर इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, थोड़ा और बड़े हुए, केजी से 4 में पहुँचे, धीरे धीरे पढ़ने लिखने की डिमांड बढ़ने लगती है। प्ले स्कूल में तो बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे क्लास में जब बढ़े तो ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत हुई। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम होती चली गई। तो आप देखिएगा कि कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिक वर्ड्स को लेकर के। कंसिस्टेंट रीडिंग स्पेलिंग एरर है, लगेगा इतनी बार तुमको सिखाते हैं फिर भी तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि रिपीटेडली वो मिस्टेक करते ही रहते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा वो चीज़ों को जब पढ़ के समझ नहीं पाते तो वो लेसन्स याद नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि उनके मोटर कोऑर्डिनेशन, उनके स्कूल के परफॉर्मेंस, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज बहुत एपरेंट होने लगती है। नेक्स्ट, ग्रेड 5 से 8 तक पहुँचते पहुँचते ये दिक्कत काफ़ी एपरेंट होती है। रिवर्स्ड लेटर सीक्वेंस, स्लो टू लर्न प्रीफिक्स सफिक्स, अवॉइड रीडिंग अलाउड, ट्रबल विथ वर्ड प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी विथ हैंड राइटिंग, है ना, अवॉइड्स राइटिंग कंपोजिशंस, सेंटेंस लिखते हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती है, कुछ कंपोजिशंस बीच के कनेक्टिंग जो वर्ड्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं, तो पूरे सेंटेंस का कोई कॉम्प्रिहेंडिबल मीनिंग नहीं निकल पाता है। तो वो फिर जब ठीक से पढ़ समझ नहीं पाते हैं तो रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें दिक्कत होती है। और ये टाइम है जब हम देखते हैं कि बच्चों में एक जो फ्रेंडशिप डेवलप होना चाहिए, सोशल स्किल डेवलप होना चाहिए, सपोर्ट डेवलप होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ग्रेजुअली बच्चे सीख नहीं पाते हैं और उनमें उनकी कमी होने लगती है। नेक्स्ट, हाई स्कूल में आते आते आप देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक कंटिन्यूड है, तो बच्चे लिखना पढ़ना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को पढ़ लिया समझा नहीं तो उसको जब लिखना होता है तो समराइज करके ऑर्गेनाइज करके लिख नहीं पाते हैं। किसी भी न्यू सेटिंग में एडजस्ट करना मुश्किल होता है। और ये टाइम है जब बच्चे बोर्ड के पढ़ाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस वहाँ और ज़्यादा डिटोरेटेड दिखते हैं। अगर हम लोग एक एक्ट से हट के भी देखें, सो इन द एजुकेशन सिस्टम देयर इज़ प्रोविजन ऑफ वेरियस कंसेशंस, जैसे राइटर्स मिल सकते हैं लिखने के लिए, एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम का प्रोविज़न है, और कुछ कुछ एजुकेशन सिस्टम बच्चे के लिए एक मॉडिफाइड सिलेबस पर एग्ज़ाम देना भी अलाउ करते हैं, जहाँ पर अगर लिखने की दिक्कत है तो रिटन एक्सप्रेशन पर कम फोकस रहे। सर्टिफिकेशन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द एक्ट स्क्रीनिंग होना चाहिए स्कूल में, तो इन द स्कूल देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ ए बोर्ड, एक बोर्ड रहेगा जिसमें या प्रिंसिपल खुद भी उसको कर सकते हैं। क्लास टीचर अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की तरह के प्रॉब्लम को बताते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग होगी। एक्ट में ही जो रूल्स बने हुए हैं, एक्ट के रूल जो 2024 में आए, उसमें अनेक्शर में वो सारे स्क्रीनिंग टूल लगे हुए हैं। तो स्क्रीनिंग करना है, स्क्रीनिंग करने के बाद फर्दर असेसमेंट के लिए रेफ़र करना है। तो सबसे पहले स्कूल में स्क्रीनिंग होगी,
उसके बाद पेडियाट्रिशियन के पास भेजे जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों में देखने और सुनने की दिक्कत होती है, जिसको वो खुद नहीं समझते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो उस दिक्कत की वजह से उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होते हैं, क्योंकि क्लास में कही हुई बात वो प्रॉपरली सुन के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, लिखी हुई चीज़ प्रॉपरली देख नहीं पाए, और हेजिटेशन में कहते नहीं है कि हमको दिख नहीं रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है। तो एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इसीलिए एक पेडियाट्रिशियन के पास भेजा जाना है, एंड देन रेफरल शुड बी डन फॉर असेसमेंट ऑफ एसएलडी। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्कूल में स्क्रीनिंग होगी, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे पेडियाट्रिशियन, उसके बाद उनका आईक्यू असेसमेंट होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा ना 85 से कम होनी चाहिए आईक्यू, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बॉर्डर लाइन में जा रहे हैं, और यहाँ पर आईक्यू 85 के ऊपर होना है। तो सबसे पहले आईक्यू असेसमेंट होना है, उसके बाद एसएलडी का टेस्ट होना है, जिसके लिए अगर हम एक्ट के प्रोविज़न देखें तो निम्हांस में डेवलप स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी टूल को यूज़ करना है। मेडिकल बोर्ड में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या सीएमओ होते हैं, सिविल सर्जन हो सकते हैं, पेडियाट्रिशियन या पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जहां अवेलेबल हो, क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और टीचर ट्रेंड फॉर असेसमेंट ऑफ एसएलडी। तो ये एक बोर्ड का कंपोजिशन है, और इसको जब असेसमेंट किया जा रहा है, द चाइल्ड हैज़ टू अंडरगो रिपीट सर्टिफिकेशन एट द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। तो जैसे हम लोगों ने देखा ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 5, 10 और 18 ईयर्स पे असेसमेंट होना है, तो यहाँ पर जब भी असेसमेंट कर रहे हैं बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, again at the age of 14 and 18 assessment will be repeated, and after 18 that certificate will be valid as a permanent certificate. Next. अब यहाँ अगर हम लोग मैनेजमेंट देखें, सो स्पेशल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्पेशल एजुकेशन मीन्स alternate training strategies that is tailored according to the child's deficit, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, जहाँ पर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से स्पेशल एजुकेशन टेक्निक से उनको लिखना पढ़ना सिखाना है। कई बार एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग कह रहे हैं ना कि बच्चे को क्लास में डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ सकता है, जो इनडिसिप्लिन चाइल्ड, केयरलेस चाइल्ड, ऐसे चीज़ें जो होती हैं बार बार जो कही जाती हैं, उसका पेशेंट के सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ सब पर इम्पैक्ट होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ सेटअप में हमको रेफ़र करना है। अगर बिहेवियरल मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम के लिए होती है, और बार बार हम इसीलिए पेरेंटल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तीसरी कंडीशन जो यहाँ पर प्रोमिनेंटली मेंशन है, ऑटिज़म, जिसको परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंडर ये क्लासिफाइड है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है? चिल्ड्रेन लैक एज अप्रोप्रिएट सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत पुअर होता है, पुअर स्पीच, पुअर लैंग्वेज डेवलपमेंट। These children are daily living, inappropriate motor behavior, peculiar speech, sound and repeated behaviors, और कभी कभी इन बच्चों में किसी एरिया में बहुत ही वो एक्सेल भी कर जाते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें तो बच्चा होगा आपके सामने, जिसको मान लीजिए 5 इयर्स का बच्चा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अगर लोगों के बीच में आया तो वो एक सोशल स्माइल देगा, लोगों को हाय हेलो अपने हिसाब से जो भी विश करना है विश करेगा, कोई कुछ पूछता है तो उसकी बात का जवाब देगा। लेकिन अगर आप
ऑटिज़म को बच्चे को देखेंगे तो वो अंदर आएंगे तो उनकी नज़र नीचे होगी, किसी से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करते, सोशल स्माइल नहीं होती। हम लोग अगर पैट कर लें, पूछ लें कैसे हो, उसके लिए वो जवाब नहीं देते। उनके जो कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, हर एस्पेक्ट में पुअर होती है। कभी कभी आप देखिएगा जंप करना शुरू किया तो लगातार जंप कर रहे हैं, एक खिलौने से खेल रहे हैं तो बाकी जितने भी खिलौने हों उनको पसंद भी हों तब भी वो उसी एक खिलौने से खेल रहे होते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर हम देखते हैं। नेक्स्ट, तो ऑटिज्म के लिए एक्ट के ही मेंशन टूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डायग्नोसिस के लिए इनक्लेन डायग्नोस्टिक टूल को यूज़ करना है। उसके साथ साथ अगर डायग्नोसिस हो गई, क्योंकि बहुत सारे दूसरी भी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों में पुअर सोशल स्किल हो सकती है, स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम ऑटिज़म की डायग्नोसिस है कि नहीं ये इंश्योर करें इनक्लेन से। फिर हम देखेंगे कि सीवियरिटी ऑफ ऑटिज़म क्या है। तो उसके लिए ये ईसा एक टेस्ट है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म, जिसके 40 आइटम 6 डोमेन्स में क्लासिफाइड हैं। सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी, इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस, स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर पैटर्न, सेंसरी डिसाइड की जाती है। जितने भी डिसेबिलिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, डिसेबिलिटी के कंटेक्स्ट में आप एक टर्म सुनेंगे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी है जिसके लिए सर्टिफिकेट फिर मिलता है, जिसको यूजुअली 40% से अबव जब डिसेबिलिटी होती है तभी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये सारी उनकी स्कोरिंग है। नेक्स्ट में करिए। बेस्ड ऑन दी स्कोर हम क्लासिफाई करते हैं और फिर उसके बाद ये डिसाइड होता है कि कितनी डिसेबिलिटी है। सर्टिफिकेशन बोर्ड में पेडियाट्रिशियन होते हैं या पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। हाँ, नेक्स्ट, मैनेजमेंट, बिहेवियरल मैनेजमेंट, स्किल ट्रेनिंग, पेरेंटल ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन, मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन। कुछ बच्चों को ना आवाज़ के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में बहुत कम होती है, कुछ में विज़न को लेके सेंसिटिविटी बहुत होती है। तो उसी तरह से अकॉर्डिंगली मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट कैटेगरी है मेंटल इलनेस। एक्ट डिफाइन करता है ए सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी that grossly impairs judgment, behavior, capacity to recognize reality or ability to meet ordinary demands of life। और exclusion है, retardation जो है वो incomplete development या सब average intellectual ability से नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर assessment के लिए यूज़ होता है आइडियाज स्केल और ज़रूरत हो तो IQ असेसमेंट। नेक्स्ट, तो आइडियाज़ में ये 4 एरिया है, सेल्फ केयर, इंटरपर्सनल एक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क। नेक्स्ट, तो ये क्लासिफिकेशन है, आइडियाज़ के स्कोर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। और जैसा हम लोगों ने कहा, मोर देन 40% डिसेबिलिटी होगी तभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट करिए। कुछ लोगों में मेंटल इलनेस के डिसेबिलिटी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो उनका IQ असेसमेंट भी होता है। मेडिकल बोर्ड में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, CMO, साइकियाट्रिस्ट फॉर क्लिनिकल असेसमेंट, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट टू एडमिनिस्टर IQ टेस्ट। मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो मेन लाइन ऑफ मैनेजमेंट फार्माकोथेरेपी है। आउट पेशेंट सेटअप, इन पेशेंट सेटअप ये डिसाइड किया जाएगा बाय कंसर्न साइकियाट्रिस्ट। और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, साइको सोशल मैनेजमेंट,
ज़रूरत के हिसाब से फैमिली इंटरवेंशन, और रिहैबिलिटेशन जो साइको सोशल रिहैबिलिटेशन हो सकता है या वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, इसकी ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट, एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा तरह की दिक्कत अगर हो तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए असेसमेंट होता है। नेक्स्ट करिएगा, इनके भी अथॉरिटी सेम है। हाँ, नेक्स्ट। और ये तो मेंटल हेल्थ सेटअप की जो हम लोगों ने डिसेबिलिटी डिस्कस की, उसके अलावा भी सेरेब्रल पाल्सी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बच्चे आईक्यू असेसमेंट के लिए रेफर्ड होते हैं। तो ये ब्रीफ में हम लोगों ने डिस्कस किया है डिसेबिलिटी इन मेंटल हेल्थ सेटअप। और सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो होते हैं सिविल हॉस्पिटल में, जो सदर अस्पताल, वहाँ एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है। तो जैसे रिनपास में आए और ये सारे असेसमेंट होते हैं, सीआईपी में भी असेसमेंट होते हैं, उस असेसमेंट रिपोर्ट को ले जा करके डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी बोर्ड में वहाँ पर ले जाना है और फिर आगे का प्रोसेस अकॉर्डिंगली होता है। और मान लीजिए कि आप जानते हो किसी को जिसने कोई असेसमेंट कराया नहीं है, तो एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप उसको सदर अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी बोर्ड के पास भेजिए। आगे के प्रोसेस वो लोग खुद ही लाइन अप कर देंगे, ठीक है। ये रिनपास के टेलीफोनिक हेल्पलाइन है। किसी भी तरह के क्वेरीज, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, कुछ थेरेपेटिक सेशंस चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पहला मोबाइल नंबर है ये 24/7 अवेलेबल है, और बाकी 2 टोल फ्री नंबर फ़िलहाल के लिए ये वर्किंग आवर में अवेलेबल हैं ऑन वर्किंग डेज। सब्सिक्वेंटली ये भी 24 आवर्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू। हेलो चेक, यस। डॉक्टर मंसूर जहाँ का मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चाइल्डहुड डिसेबिलिटी अंडर PWD एक्ट इन मेंटल हेल्थ सेटअप के बारे में हमें जानकारी दी। और सच पूछे तो मैम ऐसा लग रहा था कि हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में बैठे हैं और कोई गेस्ट स्पीकर आया और उससे हम लोग एक नए विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये हम जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़े दिन में हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स भी बन जाएंगे तो हम अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है छोटे बच्चों के लिए। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे HOD फिलॉसफी के प्रोफेसर PK गुप्ता सर को कि सर्टिफिकेट से हमारे मैम को सम्मानित करें। हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर संजय कुमार मुंडा जी से, जो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एंड इंचार्ज सेंटर ऑफ एडिक्शन साइकेट्री CIP रांची है। सर, इसके पहले कि आप बोले, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में प्रोफेसर सचिन मैम है जो इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे।
सबसे पहले सबों को जोहार and a very good evening. I think I feel that I'm a little late here. My presentation is happening late, and there is a good thing happened that few more people have joined. So the concurrent sessions are over maybe, and but the flip side is also that very soon you people will get restless कि खत्म नहीं हो रहा घर जाना है. So I have to really very crisp in my presentation. I know this is a very kind of a big responsibility on me to complete my presentation well before time. लेकिन ये है कि मुझे ज़्यादा बोलने का आदत है, खासकर इस तरह का टॉपिक होता है. तो let's see how I do justice to what I intend to do today this evening. So enhancing mental health for college youth, उनके लिए tips देना is very different. Next. So when it comes to college, so what do you think of college life? Abhi recently I was in a school addressing mental health issues among students. So I asked one 11th class student about this ki what is your future plan. तो वो बोला 2 साल के बाद कॉलेज जाएंगे. बहुत एक्साइटेड होके बोल रहा था 2 साल के बाद कॉलेज जाएंगे. तो हम बोले कॉलेज का क्या मतलब, कॉलेज के लिए अभी से एक्साइटेड हो क्यों? तो वो बोला कॉलेज में बहुत फन और फ्रीडम मिलता है, यहाँ स्कूल में नहीं है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन अ स्कूल चाइल्ड होल्ड्स फॉर कॉलेज लाइफ. बट व्हाट डू वी थिंक अबाउट आवर ओन कॉलेज लाइफ? हमारा कॉलेज लाइफ और आज के कॉलेज लाइफ में बहुत फर्क है. बट व्हेन वी थिंक अबाउट कॉलेज लाइफ, next, it is all about, we know that a college is a journey full of dreams. It is full of pressures and possibilities. Apart from learning, apart from all the fun and freedom which one gets. So when someone comes out of school और college में join करता है तो learning with fun and freedom is नहीं होता है. There are lot of hidden burden, emotional and mental, college student faces. Next. So अगर हम बात करें कि कॉलेज लाइफ में किस तरह का मेंटल और इमोशनल बर्डन एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, तो ये जो इमोशनल और मेंटल बर्डन इट कम्स फ्रॉम 5 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स. सो दिस इज द रियलिटी ऑफ कॉलेज लाइफ. द फर्स्ट वन इज एकेडमिक प्रेशर. वी नो दैट कॉलेज एकेडमिक्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्कूल एकेडमिक्स. हाउ? किस तरह से? मे बी कॉलेज का जो एकेडमिक होता है इट इज मोर चैलेंजिंग इन सर्टन वे. यहाँ पर कंटिन्यूअस असेसमेंट्स होते रहते हैं. देयर इज सम हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट होता है कॉलेज में. एक्सपेक्टेशंस आर हाई फ्रॉम बोथ टीचर्स, फ्रॉम पेरेंट्स, एवरीवन. एंड ऑल्सो देयर इज अ फियर ऑफ फेल्यूर जो कि कॉलेज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहता है. तो कॉलेज का जो एकेडमिक प्रेशर है ये जो होता है ना वो प्रेशर कुकर की तरह होता है. अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो कभी भी फट सकता है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल एक्सपेक्टेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉलेज इटसेल्फ इज अ सोशल वर्ल्ड. एक किस्म का सोशल वर्ल्ड होता है एंड स्टूडेंट्स ऑफन फील प्रेशराइज्ड बिकॉज ऑफ many things, like they feel pressure to fit in the college life. स्कूल से बाहर आके कॉलेज में अचानक सीनियर्स को देख रहे हैं, अपने जूनियर्स को देख रहे हैं या अपने साथियों को देख रहे हैं, तो there is always a pressure to fit in the crowd. हम कहीं
अलग से दिखाई ना पड़े, हम सबके साथ में शामिल हो सके, ये फिटिंग इन वाला प्रेशर होता है. दिस इज अगेन समटाइम्स वेरी वेरी डिमांडिंग. द प्रेशर टू मेक फ्रेंड्स क्विकली इज ऑल्सो समथिंग, जो बच्चे जो थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए कई बार ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि नए माहौल में, कॉलेज में, जहाँ की सब लोग फ्रीली इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स बहुत आसानी से बना पाए, ये एक प्रेशर रहता है. तीसरा, कॉलेज के लाइफ में एक अपना पर्सनल इमेज बना पाना, कैसे हम सबके बीच में, सबके ग्रुप का हिस्सा हो करके मेरा एक अपना पर्सनल आइडेंटिटी, मेरा एक पर्सनल इमेज बने, इसका भी प्रेशर रहता है सोशल एक्सपेक्टेशन के तौर पे. एंड टू कीप अप विद पीयर्स, जो बाकी साथी है एकेडमिकली एंड सोशली, कैसे हम उनके साथ साथ चल सकते हैं. तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस भी एक प्रकार का प्रेशर होता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. तीसरी अगर बात करें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं, घर छोड़ करके आके यहाँ पर रह करके पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे भी, सबके अंदर में फैमिली को लेकर के कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहता है. फैमिली के एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे आप अपने इस एजुकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, उनका एक्सपेक्टेशंस बढ़ता जाता है, ये हम सभी जानते हैं. एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर टू सक्सीड. सक्सेस के लिए, सक्सेस के जो मायने हैं वो बदल जाते हैं समय के साथ साथ जब आप बड़े होते हैं. तो ये एक चीज़ होता है. फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आपके अपने छोटे भाई बहनों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. माँ बाप आपको कहते रहते हैं कि आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा ताकि आपके छोटे भाई बहन आपके पदचिन्हों पर चल सके. तो ये जो इस तरह का फैमिली एक्सपेक्टेशंस होता है. इमोशनल ऑब्लिगेशंस आप फैमिली को लेकर के चलते हैं कि आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई के लिए लोन लिया गया है. तो ये सब जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इसके बारे में अगर आप स्टूडेंट से बात करो तो उनके अंदर ये चीज़ें रहती है जिस पर कभी शायद ही चर्चा की जाती है. इसी तरह से कैरियर को लेकर के अनसर्टेनिटी, बच्चा हमेशा सोचेगा कि मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, सही किया नहीं किया, या कोई भी जो चॉइस ले रहा है, तो बहुत सारे मन में एक अनसर्टेनिटी बना रहता है कैरियर को लेकर के कि अब ले तो लिया है, अब मुझे इंटर्नशिप करने के लिए कहाँ पर मिलेगा, मेरे को कोई रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारे. और किस तरह का हम फ्यूचर, अभी मैं साइकोलॉजी के एक बच्चे से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था साइकोलॉजी लियो आगे का क्या है, तो बोला क्लिनिकल साइकोलॉजी ज्वाइन करना है. हम बोले बाकी बच्चे और क्या सोच रहे हैं, तो बोला पता नहीं, कुछ लोग तो सोच रहे हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जाएंगे. तो बहुत सारा ऑप्शंस इसके बाद खुल जाता है ना. तो कैसे आप चूज करते हो इसके आगे क्या करना है, तो ये एक अनसर्टेनिटी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर के रूप में सामने आता है. हम लोग आज सभी जानते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट का बोलबाला है, तो आज के युग में कॉलेज स्टूडेंट अगर हम कहें हाइपर कनेक्टेड होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. All college students are hyper connected with each other, with the social media, with the world at large. तो एक तरह से उनके पास कांस्टेंट नोटिफिकेशन आते रहता है कि झारखंड में, अगर हम बात करें, झारखंड में जेपीएससी का एग्जाम इतने दिनों के बाद हुआ है, झारखंड में इस तरह का हो रहा है, बहुत सारा एकेडमिक लाइन पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, बढ़ रही है, देश में क्या है. तो ये सारे जो नोटिफिकेशंस होते हैं, ये सबका एक अलग प्रेशर होता है. दोस्तों के बीच में जो आजकल एक बहुत फेमस टर्म होता है फोमो, पता नहीं आप लोग कितना इसके बारे में जानते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो ये डिजिटल वर्ल्ड में जब लोग इंटरैक्ट करते हैं, तो ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है. नेक्स्ट या तो अगर हम लोग देखें ये जो प्रेशर है, तो इसको हम लोग कॉलेज यूथ को अगर ध्यान में रखें तो एक मान के चलना चाहिए कि यूथ इज नॉट जस्ट अ टाइम ऑफ लाइफ. एक फेमस कोट है सैमुअल उलमैन का, जो कि मैं कोट करना चाहूँगा, बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. और इन सब चीज़ों के लिए ही
वाई वी आर हियर, बिकॉज हम लोग को एक्सप्लोर करना है कि ये बच्चे जो है कॉलेज स्टूडेंट है, कैसे वी कैन प्रोटेक्ट द माइंड विच हार्बर्स सो मेनी ड्रीम्स इन कॉलेज लाइफ। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा देश जो है इंडिया, ये लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। सो एक तरह से अगर कहा जाए, वी आर काइंड ऑफ अ यूथ पावर ऑफ द वर्ल्ड, और यही वजह है कि देर इज अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ दिस यूथ पावर ऑफ द वर्ल्ड until unless the mental health of this youth is protected. Next. Next. So why mental health matters now? आज के दिन में हम जानते हैं स्ट्रेस बढ़ने का रफ्तार जो है ना, उसका कोई मतलब वो एक्सेलरेटिंग स्पीड से चल रहा है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। Competition is getting more and more intense and more difficult with time. एक साल कोई कंपटीशन एग्जाम है, अगर बच्चा क्लियर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम में वो 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। सो दिस कंपटीशन इज रियली गेटिंग वेरी इंटेंस। सोशल कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा से कॉन्स्टेंटली हर युग में प्रेजेंट रहा है, और आज तो और ज्यादा हो गया है। एंड सपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सपोर्ट सिस्टम इज श्रिंकिंग। इसके पीछे भी बहुत सारी वजहें हैं कि जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का गैप हो गया है पेरेंट्स एंड चाइल्ड में, टीचर्स एंड स्टूडेंट में, हम लोग हर जगह, इवन फ्रेंड्स में। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट, सो कॉलेज में हम लोग सिर्फ एजुकेशन की ही क्यों नहीं बात करते हैं? व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट mental health and mental health well-being? Because education without well-being, अगर ऐसा होता है तो it is going to lead us to burnout, anxiety, poor performance and loss of motivation. और ये सब चीजें किस तरह से होती है, थोड़ा सा हम लोग आगे के स्लाइड्स में देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक मार्क ट्वाइन का ये जो वर्ड्स है मुझे हमेशा बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स पीपल लूज, द वन दैट इज मिस्ड द मोस्ट इज द हेल्थ ऑफ दैट स्लीपिंग जाइंट दैट इज रिसाइडिंग विद इन द क्रेनियम। तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, इसको हम जिस तरह से भूलते हैं, हम लोग का देखिए, अगर फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो हम लोगों का जो रोजमर्रा के जीवन में कुछ कुछ जो कहावत है, अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिजिकल हेल्थ को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। बहुत दिनों से सुनते आते हैं, इसका मतलब ही क्या है कि शरीर को स्वस्थ रखो, मन तो अपने आप हो जाएगा, जो कि एक मिसकंसेप्शन है। We have to take care of our mind as well as our body. Next. So health का definition अगर बोले तो health is a state of complete physical, mental and social well-being, not just absence of disease. बीमारी नहीं है, सिर्फ नहीं, ये एक well-being, बेहतरी का अवस्था है। और ये किस तरह का well-being? Physical well-being, I am capable of doing all my job and things physically. I am mentally sound, I am mentally fit to do all my responsibilities, and I am very well socially connected with my environment. So ये WHO का definition है health का। जब mental health की बात करते हैं तो mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, एक चीज हुआ, he can cope with normal stresses of life and he can work productively and fruitfully and contribute to the society from where he belongs. तो ये जो mental health का definition है, ये अपने आप में
बताता है कि अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है तो हम किस तरह से हमें होना चाहिए। नेक्स्ट। सो मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट हाउ वी थिंक, मतलब हम कैसे डे टू डे हैसल्स स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। हाउ वी फील, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने इमोशंस को कैसे एप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं, हम अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम दूसरों के इमोशंस को भी कैसे समझते हैं और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। ये सारा चीज हमारा मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। मेरे सामने कोई दुखी है तो उसके साथ क्या हम भी दुखी हो जाते हैं? अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हम जगह लोग को देखे बिना रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एंड द एबिलिटी टू एक्ट, मेक चॉइसेस। मान लीजिए अभी मैं कॉलेज की बात कर रहा था, कॉलेज स्टूडेंट पहली बार बाहर किसी पार्टी में जाता है। पार्टी में एक तरफ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पड़ा हुआ है जो मिल रहा है, एक तरफ बियर अल्कोहल वगैरह भी सर्व हो रहा है बड़े लोगों के लिए। कैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट किसी एक स्पेशल डे को चूज करता है कि नहीं आज हमको बियर लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स में मिल रहा है, कैसे वो चूज करता है? तो दिस मेकिंग चॉइसेस इज समथिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा कुछ मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है कि हम लाइफ में किस तरह का चॉइसेस करते हैं, किस तरह का डिसीजंस लेते हैं, हम कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने कैसे इमोशंस को समझते हैं, हम कैसे दूसरों के इमोशंस के हिसाब से अपने व्यवहार में चेंज लाते हैं, और हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को कंसेप्चुअलाइज करते हैं। हम राय का पहाड़ तो नहीं बना देते हैं, प्रॉब्लम जैसा है उसको रियलिस्टिक वे में देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। ये सारा चीज मेंटल हेल्थ का हिस्सा। नेक्स्ट नेक्स्ट। सो इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं मेंटल हेल्थ से, तो एक बोला जाता है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की भी बात करती। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ ही है, लेकिन इसका सारा एस्पेक्ट जो होता है वो एक तरह से किसी भी इंसान के प्रोग्रेस को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के सोचा जाता है। तो कॉलेज के लाइफ में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का मतलब है आप अच्छे से कॉलेज में जो आपका काम है वो आप करते हैं। यू शुड लर्न वेल, यू शुड फील वेल। मतलब आप जो कॉलेज के माहौल में, पढ़ाई के माहौल में जिस तरह के इमोशंस आपके अंदर होने चाहिए वो इमोशंस आपके अंदर है, एक ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है। यू शुड ऑल्सो रिलेट वेल विद अदर्स। वेल विद अदर्स मीन्स आप टीचर्स के साथ अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेट कर पा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेट कर पा रहे हो। ये नहीं कि घर में माँ बाप कॉन्स्टेंटली आपके पीछे पड़े हुए कि दिन भर सोशल मीडिया में क्यों पड़े रहते हो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, और आप गुस्सा कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक देयर इज अ इश्यू विद रिलेटिंग वेल विद योर पेरेंट्स सर्टेन वे। ये इस तरह की प्रॉब्लम कई बार आती है, और ये सब मेंटल हेल्थ बीमारियां नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन दीज आर मेंटल हेल्थ इश्यूज विच वी शुड लुक इनटू। देन कोपिंग वेल। किसके जीवन में परेशानी नहीं आती है? किसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा होता है? और जब प्रॉब्लम खड़ा होता है तो कैन यू कोप वेल विद योर प्रॉब्लम? तो हम कैसे कोप करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ में? 3 तरह के कोपिंग स्ट्रैटेजी ज्यादातर यूज किया जाता है। एक स्ट्रैटेजी होता है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ कि हम जो प्रॉब्लम है उसको ही एड्रेस करते हैं, हम प्रॉब्लम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना रहे, उसको हम हटा देते हैं अपने लाइफ से। सो वो हो जाता है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। अगर प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि हम प्रॉब्लम को
नहीं हटा सकते हैं, उसको एड्रेस नहीं कर सकते, तब मेरे पास क्या चारा है? क्या हम उसको अवॉइड करें? क्या उसको हम नेग्लेक्ट करें? क्या हम उसके आगे सरेंडर कर दें? क्या करना चाहिए? अगर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग हमारे क्या कहा जाए कैपेसिटी में नहीं है, प्रॉब्लम इस किस्म का है कि उसको हम नहीं बदल सकते हैं, बदल ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैंने गलती से साइकोलॉजी ले लिया एज माय फ्यूचर सब्जेक्ट एंड 6 महीने के बाद हमको रियलाइज हो रहा हम तो गलत ले लिया, अब क्या करें? तो हो सकता है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम चेंज कर ले स्ट्रीम अगर मेरे पास ऑप्शन है। अगर मान लो ऑप्शन ही नहीं है एंड आई डोंट वांट टू लूज 1 ईयर, तो हम क्या करेंगे? तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है कोप करने का आता है, उसको बोलते हैं इमोशन फोकस्ड कोपिंग। प्रॉब्लम के कारण मेरे अंदर जो इमोशन नेगेटिविटी जनरेट हो रहा है, क्या हम उसको हैंडल कर सकते हैं? दिस इज इमोशन फोकस्ड कोपिंग। और एक कोपिंग होता है, वो होता है अप्रेजल फोकस्ड कोपिंग। मतलब प्रॉब्लम को हम एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और कई बार उस दौरान हम पाते हैं कि प्रॉब्लम उतना भी भयानक नहीं है जितना हम समझ रहे थे। मतलब हम ही राय को पहाड़ की तरह बना बैठे थे और घबरा रहे थे, एक्चुअली में प्रॉब्लम बहुत आसानी से हैंडल हो सकता है। तो ये हमारा जो अप्रेजल था प्रॉब्लम को लेकर के वही गलत था, तो ये हो जाता है अप्रेजल फोकस्ड कोपिंग। तो कैसे हम कोप करते हैं? तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट लर्निंग वेल, फीलिंग वेल, relating well with others and coping well. Next. So वही चीज है, I will not go into again. Next. So why college years are vulnerable? कोई भी स्कूल से जब स्टूडेंट कॉलेज में ज्वाइन करता है, जैसे मैंने बोला एक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर जो होता है, उसमें अपने आप को साबित करके दिखाना, अपने आप का एक अलग पहचान बनाना। तो ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन, एक आइडेंटिटी कंफ्यूजन का इस एज में होना बहुत बहुत कॉमन होता है। सो कॉलेज में कॉलेज स्टूडेंट वर्नेबल होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन आइडेंटिटी। और उस समय बहुत सारा सेल्फ डाउट आ सकता है खुद को लेकर के, क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम इसके काबिल हैं, क्या हमको सपोर्ट मिलेगा घर से, क्या हमको मेरे पास उतना पैसा होगा कि हम ये कोर्स परस्यू कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन अपने आप में कई बार लोगों को वर्नेबल बनाता है कि वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस में आ सकते हैं। पीयर प्रेशर हमेशा से रहा है, दोस्तों को हम देखते हैं, दोस्तों की तरह हम रहना बनना चाहते हैं, तो कई बार ये चीज़ें प्रभावित करती है। एकेडमिक ट्रांजिशन, जैसे कि 10th तक कुछ, 12th तक कुछ और पढ़े, अब एक अलग सा फील्ड में बस उसी पर इन डेप्थ पढ़ाई करना है। एंड देन रिलेशनशिप चैलेंजेस, कॉलेज में आकर के नए दोस्त बनाना, कॉलेज में आकर कई बार लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये रिलेशनशिप चैलेंजेस, माँ बाप के साथ रिलेशंस चेंज होने लगते हैं, तो ये इन चैलेंजेस को लेकर के भी कॉलेज स्टूडेंट कई बार वर्नेबल होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। नेक्स्ट। एंड देन फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, ऑफ कोर्स जो मैं बात कर रहा था कि घर वालों ने लोन ले रखा है हमारी पढ़ाई के लिए, एक इमोशनल ऑब्लिगेशन, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर है, मुझे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट। तो अगर if you look into a day in the life of a stressed college student, you'll see that he will be struggling with the assignments, daily assignments which he gets. Then there is pressure from the social media, family expectation, exams. All these things will lead to mental and physical some kind of problem, and the sleep loss is one of them. Next. So what is stress actually?
बहुत सिंपल सब हम लोग इसको कह सकते हैं, स्ट्रेस इज ऑल अबाउट इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड्स एंड कंट्रोल। जो पढ़ाई का डिमांड है, जो फैमिली का एक्सपेक्टेशंस का डिमांड है, जो सोशल प्रेशर है, जो पीयर प्रेशर है, क्या ये सब प्रेशर को हम कंट्रोल कर पाते हैं? क्या हम उसको हैंडल कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, इम्बैलेंस है, तो स्ट्रेस होगा। सो व्हेन लाइफ डिमांड्स आर मोर देन what your mind and body can handle, that means there is stress in your life. Next. And for good mental health, how you acknowledge and how you address your stress is very very important. तो इस कई बार लाइफ में स्ट्रेस होता है, लोग हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि ये स्ट्रेस का एक मैनिफेस्टेशन है। बस ऐसे लोग बात करेंगे, आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहता है, पता नहीं क्या हो गया उसको, नहीं समझ पाते हैं कि स्ट्रेस है। नेक्स्ट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस? इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेस, बट यू कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ दी साइंस। ऐसा भी है कि हमेशा स्ट्रेस तभी नहीं आता जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर आ गया हो और आपको दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया है। ऐसा नहीं है। समटाइम्स इवन स्मॉल डेली प्रेशर्स फ्रॉम वर्क, स्कूल, फैमिली, फ्रेंड्स कैन ऑल्सो टेक अ टॉल ऑन योर माइंड एंड बॉडी। सो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस होने के लिए आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा सदमा आ गया, बहुत बड़ा प्रेशर आ गया, तभी आपको स्ट्रेस हो सकता है। डेली हैसल्स से भी स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ स्ट्रेस एक्चुअली। अगर हम इसको बात करें साइकोलॉजिकल साइंस, तो कई बार हमारे यहाँ भी मैं CIP से आता हूँ, तो CIP में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह आते रहते हैं, और एक बहुत कॉमन जो परेशानी होती है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं हो रहा है। तो ये सब बहुत कॉमन जो साइंस होते हैं, ये स्ट्रेस के ही साइंस होते हैं। बेचैनी, घबराहट, वरिंग अबाउट फ्यूचर, ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस। एंड देयर आर इमोशनल साइंस ऑल्सो, जैसे मैंने बोला, इरिटेटेड रहना, गुस्सा बार बार आ जाना, मूडी हो जाना, पल में खुश है, थोड़ी देर में गुस्सा भी हो गए, एंड फ्रस्ट्रेटेड फील करना, अपने लाइफ से खुश नहीं रहना। सबसे बड़ा बात है, अपने आप से, अपने लाइफ से, अपने आसपास के लोगों से, किसी से खुश नहीं रहना। ऐसा लगता है कि एक जंग चल रहा है अपने अंदर, अपने आप से और दूसरों के साथ में, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। फिजिकल साइंस होता है कि फिजिकली बहुत जल्दी आप फैटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं। फिजिकली आपका खान पान में चेंज आ जाता है, आप या तो ज़्यादा खाने लगते हैं, या आप बिल्कुल भूख नहीं लगती है, आप बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, या आप बहुत ज़्यादा सोने लग जा रहे हैं, दिन भर बिस्तर में पड़े रहने का मन कर रहा है। सो लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में चेंज आ जाना, ये सारा चीज़ जो होता है, ये स्ट्रेस का ही मैनिफेस्टेशंस होता है। सब अधिकतर समय इसको ओवरलुक कर दिया जाता है। बिहेवियरल साइंस, पुअर सेल्फ केयर, नहाना धोना भूल गए हैं, कपड़ा चेंज नहीं कर रहे, कपड़े कई दिनों से गंदा पहन रहे हैं, हाँ, एंजॉय करना, खुश रहना, ये सब सारा भूल गए। और कई बार इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए ही ऐसा समय आता है जब पहली बार कोई इंडिविजुअल जो है नशा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट। सो क्या इफ योर फ्रेंड शोड दीज साइंस, वुड यू नोटिस? क्या आपके आसपास कोई ऐसे साइन दिखाता है तो क्या आप नोटिस कर पाते हैं? क्या आप अपने अंदर ये स्ट्रेस के साइंस कभी महसूस कर पाते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। लेकिन एक अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, हमें ढूंढना पड़ता है। वी हैव टू मेक एफर्ट टू फाइंड इट। जैसे अगर ताला है तो चाबी है, तो वैसे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कोप। आप अपने प्रॉब्लम को कैसे कंसेप्चुअलाइज करते हैं, कैसे उसको देखते हैं,
एंड आप किस तरह का स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। हम लोग सबका एक अपना अलग तरीका होता है, कोपिंग स्टाइल होता है, और हम लोग अपने स्टाइल के हिसाब से उससे कोप करते हैं। तो नेक्स्ट, सो स्ट्रेस को मास्टरी करने के लिए मैंने ऐसे सिंपल इसको करने का कोशिश किया है। सो देर आर 5 पिलर्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट और मास्टरी, यू कुड call it. One is know yourself, second is accept yourself the way you are, third is take responsibility. अगर आपके ऊपर कोई चैलेंज भी आ गया है, कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, तो डोंट शाई अवे विद दैट एंड टेक इट. स्टे फ्लेक्सिबल एंड think rationally. Sorry for the spelling mistake. And think rationally. We'll see how each one of this makes us more competent to handle stress. Next. So know yourself means you know your limits. It means you know your strength and your weaknesses, your limitations. हमको मालूम है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि मेरा मैथमेटिक्स खराब है और हम 10th पास करने के बाद मैथ्स लेकर के बैठ गए हैं. तो मेंटल हेल्थ का बात ही हो रहा था कि यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, योर कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग. सो व्हेन यू नो योरसेल्फ, यू नो योर लिमिट्स, यू नो योर ट्रिगर्स ऑल्सो. क्या चीज आपको परेशान करता है वो भी आप जानते हैं. तो जैसे मान लीजिए कहीं क्लास के लिए तैयार होना है, रोज हम अगर लेट हो जाते हैं थोड़ा देर, या हॉस्टल में रह रहे हैं, बाथरूम वगैरह इंगेज है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो यू नो व्हाट ट्रिगर्स स्ट्रेस इन यू एंड यू नो योर कोपिंग स्टाइल. जैसे कोई किसी को, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी आपको धक्का देते हुए निकल गया और साथ में आपको गाली भी दे दिया कि ठीक से नहीं चलते हो. गलती वो किया है लेकिन आपको अपशब्द बोल के गया है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आपका क्या स्टाइल है. ये समस्या अचानक से आ गया, क्या स्टाइल है. क्या आप उसको इग्नोर कर दोगे, क्या आप उसको पलट करके गाली दोगे, क्या आप उसको धक्का दोगे, क्या करोगे. हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है कोप करने का डिफरेंट सिचुएशंस में. तो यू नो योर कोपिंग स्टाइल एंड अकॉर्डिंगली यू एक्ट. यू नो योर वैल्यूज एंड अकॉर्डिंगली यू एक्ट. सो दिस इज how knowing yourself help you to react to the environment, to make a plan for future, everything. Next. Second is accept yourself. हम लोग जैसे अपने परिवार के माहौल से बाहर निकल करके कॉलेज लाइफ में आते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम बाकी लोगों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम दूसरों की तरह शायद नहीं हैं, और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है टू फिट इन द क्राउड सबके साथ. तो आप जैसे हैं क्या वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हो. इसके लिए 2-3 चीजें हैं कि आपको समझना होगा कि यू एग्जिस्ट एज यू इन द ग्रुप. आप सबके जैसे नहीं हैं, आप अपने जैसे ही हैं. एंड यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट. कई बार ये चीज़, परफेक्शन वाली चीज़ हमेशा लोगों को परेशान करती है कि हमको हर चीज़ एक परफेक्शन के साथ करना है. एंड लॉट ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशंस आर ऑल्सो दैट कि तुमको परफेक्ट होना है. कई बार ये सब चीज़ें भी होती है. And that you are neither worthy or nor unworthy. मतलब you should not be judgmental, self judgmental कि आपको कुछ होना है या आप कुछ नहीं है, इसको भी लेकर के आपको judgmental नहीं होना. Next. Taking responsibility is very very important. यहाँ पर कुछ एक्शन वाला चीज आता है. अभी तक थोड़ा सा दिमाग से समझने वाली चीज थी. यहां पर होता है कि हाउ यू कंट्रोल योर रिएक्शंस. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया. सो हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस. गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन हम लोग सब गुस्से को जाहिर भी करते हैं, लेकिन एक सोशल कन्फॉर्मिटी के साथ जाहिर करते हैं. जैसा सोशल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से करते हैं.
बड़ों के साथ गुस्सा कुछ और, छोटों के साथ कुछ और करते हैं सब कोई। तो you can control your emotions, you can control your actions, you can control your choices. जैसे choices का I have given you an example, a boy going to a party where both alcohol and cold drinks are served and he get a temptation to try beer for the first time with some of his friends. तो क्या वहाँ पर वो अपने घर के वैल्यूज़ को याद कर पाता है कि मेरे घर में ऐसा चलन ही नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे दोस्त भले कर ले, उनके घरों में होता है शायद, लेकिन वो बह जाता है दोस्तों के प्रेशर में। तो यहाँ पर ये टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, how do you stay flexible during different life situations and circumstances of life? So whether you can adapt to new challenges in life, whether you can adjust according, suppose आप second year में आते आते आपका room partner change हो गया and you have got a new partner, room partner, क्या उसके साथ आपको एडजस्टमेंट इश्यूज होने लगे हैं, तो क्या आप वहाँ एडजस्ट हो पाते हो? क्या आप असर्टिव हो पाते हो कि अपने रूम पार्टनर को बोल सको कि मुझे तुम्हारा ये आदत पसंद नहीं है? बहुत सारी चीज़ें होती है। तो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेइंग फ्लेक्सिबल। कैन यू बाउंस बैक? फेल्योर इज समथिंग विच इज यूबिक्वियस, सबको मिलना है फेल्योर, लाइफ में सब लोग खाते हैं, कभी धोखा खाते हैं, कभी फेल भी हो जाते हैं। तो क्या हम बाउंस बैक कर पाते हैं? क्या हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है कि फिर से खड़े हो पाए? तो दिस इज व्हाट रिजिलियंस इज, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्शन, कि हम एक्सेप्ट करते हैं अपने फेलियर को, हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने मिस्टेक्स को, एंड हम फिर से तैयारी करते हैं खुद को खड़ा करने की। तो दिस इज हाउ स्टेइंग फ्लेक्सिबल इज वन ऑफ द पिलर ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, and this is something is also thinking rationally. So you should always ask, you should have a sort of tendency to introspect again and again. I mean daily one should introspect and look into inside and ask certain question. क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है? क्या मेरा सोच रियलिस्टिक है या हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं? और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो इसके पीछे क्या कोई तथ्य है जिसको कि हम खड़ा करके अपने आप को रैशनलाइज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने सोच को? तो थिंकिंग रैशनली, आस्किंग योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्टिंग योर थॉट्स, इंट्रोस्पेक्टिंग योर बिहेवियर, एक्शंस, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो इसके बाद अगर छोटा सा बात बोले, अब आई थॉट कि आई वुड बी एड्रेसिंग मोर ऑफ अ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ तो सब महारथी लोग, टीचर लोग ही बैठे हुए हैं, तो आई हैव वेरी फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग बिहाइंड, बट एनीवे some practical daily strategy has to be, sleep is something which is very very important. नींद जो होता है ना, हमारा जो शरीर रूपी इंजन का खुराक होता है, मतलब तेल होता है, तो वन शुड हैव अ स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 घंटे का नींद तो लेना चाहिए। हम लोग बहुत कम नींद लेते हैं। यू शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर ऑल्सो। You should limit your screen time. I don't know, it is very easy to say screen time, limit your screen time, but how much is too much is something, a question which comes and again. How much is too much? कितना हम screen time जो है वो ज़्यादा होता है? So लगातार अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा देख रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। दिन भर में अगर आप 4 घंटे यूज कर ले रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है। एक कंसेंसस होता है। मूव योर बॉडी, स्ट्रेच योर सेल्फ, डू सम फिजिकल एक्टिविटी इन एक्सरसाइजेस, टॉक टू समवन। आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? ईदर देर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और इफ देर इज कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इज मिसकम्युनिकेशन। तो एक जो है ना,
talking to someone जो है, it is always very very important. You should have some very confiding friend with whom you can share your private thoughts, feelings. So you should have someone in your life. Practice gratitude बहुत ज़रूरी है. ये आपको हमेशा खुश रखेगा, आपको एक वजह बताएगा कि why you are here in this world. So सेट बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है. एक बाउंड्री क्रिएट करना एज पर योर अपब्रिंगिंग, एज पर योर नॉर्म्स, एज पर योर वैल्यूज़. यू शुड सेट सर्टन बाउंड्रीज. नहीं यहाँ तक कर सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं. नेक्स्ट. So building resilience means you should find support from inside, you should find support from outside, from your near and dear ones. You should develop such skills to handle what is going wrong in your life and bounce back in life. You should have some sort of self-belief in you, and you should be able to adapt to the new challenge that has come up in your life. Next. So finally, ये सब चीज़ करने का पर्पस क्या है? You should find a purpose and meaning of life. This is something which is जो कि हम लोग समझते नहीं हैं कई बार, या हम लोग सोचते नहीं. ये बहुत ही existential topic है. I think गुप्ता सर यहाँ पर philosophy में है, ज़्यादातर ये philosophical concept होता है, existential concept होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, purpose क्या है, meaning क्या है. ये mental health से बहुत closely connected होता है. So mental health grows when you start contributing to yourself, to the society, to the family in which you live. Mental health grows, you start connecting with yourself, you start connecting with people around you. Mental health grows when you create something. Create something means you create a kind of aspiration in you, your family, and you start caring for yourself and your near and dear ones. So this is how mental health becomes a very important part of our existence itself, not just in college life. हम आज exist करते हैं because of our mental health only. Next. So I think with this I would like to close my presentation, that your mind is your greatest asset. Believe it. I have not written it, believe it. So I have just written protect it, nurture it and strengthen it. But believe it that your mind is your greatest asset. अगर ये नहीं रहा तो अगर शरीर हट्टा कट्टा भी है ना, वो जो कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, नहीं, गलत है. अगर मन गड़बड़ा गया तो कितना भी स्वस्थ है शरीर, उसका कोई काम नहीं है. ये पूरा कहावत ही बेमानी हो जाता है. So with this, thank you so much for your patient listening. Thank you so much. Thank you so much, sir. Dr. Sanjay Kumar Munda, who is Professor of Psychiatry and in charge Center of Additional Psychiatry, CIP Ranchi, sir. Thank you so much for sharing your expertise on mental health and also sharing the tips for college youth to how to cope up with this stress. So moving on, I would like to call Divya Kongadi ma'am. Divya Kongadi. Yeah. Yes, I request Divya ma'am to please come on the stage and present the certificate to Dr. Sanjay Kumar Munda, sir. Sir. So please accept a token of appreciation. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. So moving on, we have till now we have so much key speakers, and for all the activities, it's now to call for vote of thanks, and for that I request Professor Priyanka Soren ma'am,
Assistant Professor, Department of Psychology, GOSSNER Karachi, to please come on stage and give a few voting remarks. A very good evening to one and all. I know it's quite late, but I won't take much. So yes, I'm Priyanka Soren, currently designated as Head, Department of Psychology in GOSSNER College, Ranchi, and today I stand here on behalf of GOSSNER College family to present vote of thanks to all the eminent speakers of the session who not only took out their precious time to join us, but also for sharing your knowledge on us, sir. Thank you so much, everyone. First of all, since although Prabhat sir is not here, but I would like to extend my heartiest thanks to sir for coming here, giving his valuable time and a brief description on the topic understanding consumer behavior, basic theory and evaluation. I would also like to thank Dr. Debashish Sen Sarma sir. Thank you so much, sir, for coming, joining us, and your topic is very interesting and very new to many of us, sir, because we never thought that we would be able to relate theater with psychology. So definitely it has opened up a new arena of knowledge for all of us, sir. So thank you so much for presenting a lecture and talk in front of us. I would also like to thank, okay, so before that I would just like to give a brief disclaimer cum description. I'm not very prepared for this vote of thanks, but yes, we have two very special person, very important person we have here, Dr. Sanjay Kumar Munda sir and Dr. Masroor Jahan ma'am. They have a significant contribution not only in the field of mental health, but in my personal life as well. अगर मैं बताऊं तो संजय कुमार मुंडा sir was the first person जिनसे मैंने contact किया था before entering into the field of mental health. Mental health I would say because I have also done MPhil in clinical psychology, so as a teacher also, but I also identify myself as a mental health professional as well. So Dr. Sanjay Kumar Munda sir was the first person जिनसे मेरा interaction हुआ था before entering the field of mental health. मतलब मैं उसमें graduation कर रही थी and I was not very clear कि मुझे psychology honors लेकर आगे करना क्या है. तो सर की guidance की वजह से सर का guidance बहुत help किया मुझे कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, and it's an immense pleasure and a matter of pride to me कि मैं यहाँ पे मशरूर मैम को भी ना कि सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर एक शिक्षिका के तौर पर यहाँ पे मैम को मैं वेलकम कर पाई हूँ. पीछे जो सारे बच्चे बैठे हैं देख लीजिए, मशरूर जहान मैम यही हैं, क्योंकि मैम पढ़ाई के साथ साथ आपको एड्रेस करके या आपको रेफ़र करके बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ. तो मैम के द्वारा जो भी चीज़ें सीखी गई थी एंड आज जितना तेज़ आवाज़ जा रही है मेरी, मैं और हमारे जितने भी हमारी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, मैम के सामने कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि हम इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर पाएँ. सो थैंक्स टू द माइक कि आवाज़ जा रही है आज थोड़ी ऊपर. सो जो भी चीज़ें सीखी हैं, प्रोफेशनल एटिकेट हो, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन हो, और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर जो बेस होता है, कहते हैं अगर बेस नींव बहुत मजबूत हो तो ऊपर की बिल्डिंग मीनार जितनी भी आप खड़ी करते जाएं, भरोसा किया जा सकता है. तो थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पे आई हैं और जिन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे चर्चाएं मैम ने हमें क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी कि हमारे टॉक ऐसे हों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएँ, तो मैम ने जो भी जानकारी दी, आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो साइकोलॉजी के नहीं हैं या जो साइकोलॉजी से भी हैं, तो उनको डेफिनेटली ये ज्ञान हुआ है कि हम लोग PWD एक्ट के अंदर जो हमारी चाइल्डहुड डिसऑर्डर को कंसिडर किया जाता है, जिनमें सर्टिफिकेशन का प्रावधान है जिससे बच्चों को लाभान्वित होते हैं, तो उसकी एक अच्छी जानकारी मैम ने पेश की. संजय कुमार सर ने यहाँ पे अभी भी बच्चे हैं और सर जो भी स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक आपने बताई हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं सर, हमारे लिए भी बहुत लाभदायक है.
और आपने बोला कि ये जो हमारे स्ट्रैटेजीज़, डेली स्ट्रैटेजीज़ स्ट्रेस को डील करने के लिए, सर तो हमने पिक्चर ले ली है और आई विल ट्राई कि हमारे सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में उसको शेयर करेंगे, और उनको टीच करने से पहले हम खुद को भी प्रीच करेंगे कि हमें भी ज़रूरत है कि हमें भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं डिवोट देना है. Last but not the least, I would also like to extend my heartiest gratitude to Meera ma'am. Thank you so much ma'am. आप आई यहाँ पे और आपने इस प्रोग्राम का शोभा बढ़ाया. आपका यहाँ रहने मात्र से ही हमारा जो माहौल है वो खिल उठा है मैम. और हम लोग चाह रहे थे आप इनॉग्रल में भी रहते, पर मैम आप आकर हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ मैम. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड gracing this event with your presence. Thank you ma'am. And I would also like to call upon Dr. Anita Ranjan ma'am कि वो मंच पे आएँ और मीरा मैम को शॉल और मोमेंटो से सम्मानित करें मैम प्लीज़. मैम ऑन द स्टेज प्लीज़. I would also like to thanks to all the participants for being with us. I would like to thanks all the teachers, teaching and non-teaching faculty of GOSSNER College Ranchi, media person, technical team, and my dear students for being with us, giving your cooperation and support for making this conference into a reality. So thank you so much, everyone. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you, Priyanka ma'am. And this is all for today's session. Tomorrow we will meet again at 10 a.m. morning for technical session in the auditorium and as well as in room number 15. I request all participants to please come near stage for the group photograph. I request all participants to please come near stage for group photograph. नहीं, आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट, बच्चों आप भी आ जाओ सामने स्टेज के पास, जल्दी आ जाओ, लेट नहीं करो. I request all professors, delegates to please come near stage.